नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि ये लास्ट फ्यू डेज को आप लोग मैक्सिमाइज कर रहे हो अपने यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के लिए। सो हम लोग एक कॉन्सेप्ट का मैराथन ऑलरेडी कर चुके हैं और अब वी आर गोइंग टू गो इनटू द अल्टीमेट रेस मोड, टर्बो मोड। ये मोड में आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैराथन। हाँ, हम लोग वो इंपॉर्टेंट एग्जाम के ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके एप्लीकेशन को टेस्ट करेगा। ओके, सो ये जो है हम लोग का पीवाईक्यू मैराथन, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग आंसर्स। यहाँ पर conceptual clarity will also come and each and every question जो आज मैं आपके साथ में करने वाला हूं वो आपके ये एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं। ओके, इट इज think about these PYQs as your direct understanding into an examiner's mindset। जो एग्जामिनर का माइंडसेट है, that tells them to set a similar kind of a paper every time। तो वो पेपर के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए आज का मैराथन आप लोग के लिए बनाया गया है। ओके, एंड जैसे एवरी ईयर दे सेट द पेपर, कुछ पैटर्न निकल के आता है। एक पैटर्न जो रिवील होता है, वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करके बहुत सोच समझ के आपके लिए ये मैराथन डिजाइन किया गया है। ओके, रिमेंबर द Pareto principle approach। If the concept marathon was about identifying 80% इफेक्टिव टॉपिक्स जो 20% ही क्वेश्चंस को करके आप आंसर कर सकते हो। ओके, सो 20% ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोग ये मैराथन में करने वाले हैं, विच विल इनेबल यू टू गेट 80% इफेक्टिवनेस इन दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, this is the most efficient way to understand your preparation and fine tune आपके ये कुछ एंडिंग के स्ट्रेटजीज। ओके, सो हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, बिफोर दैट मैं खाली माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेक्शन को देखने वाला हूं। देर आर 10 यूनिट्स इन द यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पेपर। मैं पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन को लेने वाला हूं एंड बाकी के टीचर्स, बाकी के फैकल्टीज विल बी टेकिंग लुक एट द अदर एस्पेक्ट्स, बट वी ऑल हैव वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हर एक क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आएगा, ट्रीट इट लाइक एन एक्चुअल एग्जामिनेशन। अगर आपको उसको पॉज करना है, पॉज करिए, सॉल्व इट, उसके बाद में उसके सोल्यूशन को देखिए। ओके, सो जैसे ही क्वेश्चन आया, पॉज, थिंक, टेक अ लुक एट द सोल्यूशन ओनली आफ्टर यू ट्राई इट आउट ऑन योर ओन। तो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद में सोल्यूशन को देखेंगे। ओके, सो पे क्लोज अटेंशन टू द सोल्यूशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ एग्जाम के ट्रिक्स भी हम लोग आज आपको बताने वाले हैं। ओके, ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, ये कुछ तरीके हैं टू रिमेंबर द आंसर्स ऑन दैट एग्जामिनेशन डे जो बहुत ही जल्द आने वाला है। ओके, सो every question that you tackle here is one step closer to your UGC NET Economics JRF dream। ठीक है, तो स्पीड को बिल्ड करेंगे, एक्यूरेसी को एनहांस करेंगे एंड अपने कॉन्फिडेंस को सॉलिडिफाई करेंगे। अगर आज के 80-90% ऑफ द क्वेश्चंस यू आर बीइंग एबल टू आंसर, तो अच्छा चल रहा है आपका प्रिपरेशन। ओके, तो अब स्विच करते हैं गियर फ्रॉम लर्निंग टू अप्लाइंग। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस को टैकल करते हैं हेड ऑन एंड लेट्स मेक दिस मैराथन वर्थवाइल इंट्रोडक्शन। सो एज आई सेड, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग की कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं इन अ फ्यू क्वेश्चंस। ओके, एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, बट एज आई सेड सोल्यूशन को नहीं देखेंगे बिफोर यू ट्राई इट ऑन योर ओन। लंबा समय आपको लगेगा, बट
एग्जामिनेशन के कुछ दिन बाकी है, अब कंजूसी मत करिए मेहनत करने में। अब जितना मेहनत कर लो उतना कम है, ठीक है। तो अटेम्प्ट करेंगे फर्स्ट, उसके बाद में ही सोल्यूशन को देखेंगे। एंड अपने मेमोरी रिकॉल से निकालेंगे आंसर्स। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन मेमोरी। कौन सा इकोनॉमिस्ट ने कौन सा थ्योरी बोला, कौन से साल में बोला, कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया, ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है, राइट। बट आपको उसको रिकॉल करना है। तो रिकॉल का टेक्निक आपको सिखाएंगे। एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू ट्राई द क्वेश्चंस ऑन योर ओन फर्स्ट, एंड उसके बाद ही सोल्यूशन में जाएंगे। चलो, तो क्वेश्चन मैराथन में चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैराथन के साथ में स्टार्ट करते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहले हम लोग डील करेंगे। ये यूजीसी नेट दिसंबर 2013 में आया था पहली बार, एंड उसके बाद में भी मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। पुट द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या डेवलप हुआ था? लॉ ऑफ डिमांड, रिवील्ड प्रेफरेंस, इंडिफरेंस कर्व, एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चंस आर अ रिकरिंग पैटर्न इन द यूजीसी नेट पेपर। They test your knowledge of the evolution of economic thought and the timeliness of major theories. Understanding the historical progression helps connect the dots or the story of microeconomics. और ये बहुत अच्छा important pattern है। हमेशा chronological questions पे रहता है दिमाग इनका। तो यहाँ पर सबसे पहले आया था, चलिए सोल्यूशन में जाते हैं। सबसे पहले आया था लॉ ऑफ डिमांड। तो नंबर वन पे है लॉ ऑफ डिमांड, नंबर टू पे है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर आया था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बाय हिक्स एंड एलन 1934 में। फिर 47 में आया रिवील्ड प्रेफरेंस। तो आंसर होगा 1432। 1432 आंसर है बी, बॉम्बे। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं फॉर दिस मैराथन। यूटिलिटी थ्योरी एंड एसोसिएटेड इकोनॉमिस्ट्स, ये जून 2012 में भी आया हुआ है, एंड प्रीवियस एंड उसके बाद में भी बहुत बार आया हुआ है। मैच द आइटम्स इन लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। लिस्ट वन हो गया कार्डिनल यूटिलिटी ऑफ डिमांड। कार्डिनल यूटिलिटी ऑफ डिमांड किसने बोला था? अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था। ओके, सो बिफोर आई गेट इनटू द सॉल्यूशन, ये है लिस्ट वन, 1 2 3 4। लिस्ट टू है ये। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। वन किससे है एसोसिएटेड? मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, 1 2 से है एसोसिएटेड, अल्फ्रेड मार्शल। ओके, बाकियों को देखिए। रिवील्ड प्रेफरेंस किससे है एसोसिएटेड? अब अगर सोल्यूशन में जाते हैं, रिवील्ड प्रेफरेंस है एसोसिएटेड विद सैम्यूलसन। ओके, 1 2 2 4 इंडिफरेंस प्रेफरेंस थ्योरी। इंडिफरेंस प्रेफरेंस थ्योरी किससे एसोसिएटेड है? हिक्स एंड एलन। And utility index under uncertainty was first taken out by von Neumann and Oscar Morgenstern. तो ये आंसर हो गया सी, 1 2 2 4 3 1 4 3। Why is this important? Knowing which economist is associated with which theory is extremely important for UGC NET Economics. ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, तो अल्फ्रेड मार्शल का नाम के साथ में एसोसिएटेड रहेंगे काफी सारे क्वेश्चंस आपके ये एग्जामिनेशन में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये ए है। बी, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये सही नहीं है। इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द टू एक्सिस। ओके,
इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये तो सही ही है। ओके, तो इसका क्या आंसर होगा प्लीज देखिए, बताइए क्या आंसर होगा। ए सी एंड डी आर ट्रू। ए भी ट्रू है, सी भी ट्रू है, डी भी ट्रू है, क्योंकि कॉन्वेक्स होता है, राइट। ए सी एंड डी आर ट्रू, आंसर हो गया सी। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स आर कोर टू द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। तो इंडिफरेंस कर्व एंड उसके प्रॉपर्टीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बहुत बार आया हुआ है। इंडिफरेंस कर्व्स के प्रॉपर्टीज को टैकल करते हुए क्वेश्चंस काफी रिपीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, गिफन पैराडॉक्स अकर्स व्हेन द इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, पॉजिटिव, क्या होता है बताइए। Giffen goods are classical anomaly frequently tested. Understanding the interplay between income and substitution effect is extremely crucial for understanding the Giffen paradox. तो Giffen is also an inferior good. तो income effect तो negative ही होता है, but negative आपका substitution effect से भी ज्यादा होता है, तो आंसर होगा D, negative and the income effect greater than the substitution effect। तो substitution effect को ओवर पावर करते हुए इनकम इफेक्ट टेक्स इट टू अ रीजन जहां पर लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट होल्डिंग। तो आंसर है डी इन दिस केस। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए फ्रॉम द क्वेश्चन मैराथन। अब नेक्स्ट में चलते हैं प्राइस इलास्टिटी। इलास्टिटी के भी क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं, बट इजी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मेजर्स ऑफ प्राइस इलास्टिटी ऑफ डिमांड। बहुत इजी है ये, क्या होगा। आंसर इज ए। तो del qx del px into px by qx, that is what is the, that is what is the answer। सही है, आंसर है ए। अब इलास्टिसिटी के एक और टाइप के एप्लीकेशन में चलते हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 फॉर अ डिमांड कर्व विच इज, कब होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलवेज इक्वल टू 1। आपको ये समझना जरूरी है कि कब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो। जीरो होता है जब वर्टिकल होता है, इंफिनिटी होता है जब डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल। एंड वन कब होता है, वन होता है जब, पॉज करने का टाइम है, पहले खुद से सोचिए, आंसर के बारे में सोचिए। यस, सोल्यूशन होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो क्वेश्चन को दिखाते ही आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद में आंसर को मैं रिवील करूंगा, बट पॉज द वीडियो, दैट्स अ गुड आइडिया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कॉन्वेक्स डिमांड कर्व्स। नंबर 7, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन है वापस, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सी एस प्रोडक्शन फंक्शन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको पुट करिए। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कंज्यूमर थ्योरी में हमने देखा था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को पुट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो यहां पर क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी, सी एस प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहले लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ओके, फिर उसके बाद में कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, फिर उसके बाद में सी एस, फिर ट्रांसलॉग आया था 1971 में। ओके, कॉप डगलस आया था 1928, सी एस 61, फिर 71 ट्रांसलॉग।
ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ओके, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व रिलेशनशिप्स, दीज आर 5 स्टेटमेंट्स अबाउट शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। Marginal cost curve cuts both short run average cost curve and average variable cost curve at their lowest point. इसमें क्या आंसर होगा, प्लीज एक बार पूरा देखिए। ये रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉस्ट कर्व्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया को डेफिनेटली आपको हैंडल करना है अच्छे से। ठीक है, तो यहां पर आंसर है मार्जिनल कर्व कट्स बोथ द एवरेज एंड द वेरिएबल कॉस्ट लोएस्ट पॉइंट, ये सही है। MC curve cuts AC curve from, but nothing can be said about ABC, नहीं, दोनों को कट करता है ना। The distance between total cost curve and the total variable cost gets reduced as quantity increases। आह, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। The average fixed cost asymptotic to the cost axis, ये सही है। AC curve is U shaped, ये सही है। A, D and E D, E and A, ये आंसर है। ये रिलेशनशिप आपको बताता है, MC, AC, ABC, AFC सब के रिलेशनशिप के बारे में बात करता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए ये जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये दिसंबर 2014 में सबसे पहली बार आया था, और इट्स अगेन समथिंग दैट इज repeated multiple times. So, which of the following conditions support long-run equilibrium in monopolistic competition? Monopolistic competition में क्या होता है? Average revenue is equal to average cost, marginal revenue is equal to marginal cost. Monopoly and perfect competition का मिश्रण है। यहाँ पर differentiated products हैं, but profit is equal to zero, मतलब कि normal profit है, like perfect competition. So, MR is equal to MC and AR is equal to AC. सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूनिक लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को डायरेक्टली टेस्ट करता है। ओके, तो ये भी जरूरी कॉन्सेप्ट है। एज आई सेड, अगर आपसे कॉन्सेप्ट आंसर हो रहा है एंड यू आर बीइंग एबल टू डू दीज, दैट्स वेरी गुड, इट मींस कि आपका प्रिपरेशन इन लाइन है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, द प्राइस ऑफ चार्जिंग कंज्यूमर द रिजर्वेशन प्राइस इज कॉल्ड, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10। The practice of charging each consumer the reservation price is called first degree price discrimination. Okay, इंटरटेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलकर कुछ नहीं होता। थर्ड डिग्री होता है डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइसेस। सेकंड डिग्री होता है बल्क डिस्काउंट, अलग अलग क्वांटिटीज पे अलग प्राइसिंग। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट एंड इलास्टिसिटी पे क्वेश्चन है। A discriminating monopolist will charge a higher price in the market in which the price elasticity is price elasticity of uh, price elasticity of demand is smaller। जहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, मतलब कि इनइलास्टिक डिमांड है, वहां पर प्राइस विल बी हायर। सो इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट वन अगर इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट टू से कम है, सो प्राइस in market 1 will be greater than price of market 2। I'm talking about absolute value of the elasticity of demand। जितना इलास्टिक डिमांड उतना ज्यादा प्राइस उस मार्केट में चार्ज करेगा मोनोपोलिस्ट। ओके, ये मोनोपोलिस्ट का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का अच्छा क्वेश्चन है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। किंग डिमांड कर्व एंड प्राइस रिजिडिटी। पॉइंट ऑफ किंक इन द किंग डिमांड कर्व indicates
व्हाट क्वेश्चन देखिए. Kink in the Sweezy model comes because of price rigidity. जब नीचे कर रहा है प्राइस तब तो फॉलो करेगा फर्म, जब ऊपर कर रहा है तो फॉलो नहीं करेगा. प्राइस रिजिडिटी भी दिखाता है, क्वांटिटी रिजिडिटी भी दिखाता है, दोनों ही रिजिड हैं. King demand curve is a classical model explaining price rigidity in oligopoly and understanding the implications. ठीक है. राइट. सॉरी, क्वांटिटी रिजिडिटी नहीं है, क्वांटिटी फ्लेक्सिबिलिटी है. प्राइस रिजिडिटी एंड क्वांटिटी 1 and 4 आर करेक्ट. सॉरी, ऑप्शन डी है. ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द स्वीजी मॉडल्स पर्सपेक्टिव. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, देन 14. लेबर सप्लाई कर्व एंड इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है. व्हेन इनकम इफेक्ट बिकम्स स्ट्रॉन्गर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, when the income effect becomes stronger than the substitution effect, तब क्या होता है? तब basically labor supply curve will basically bend backward. जब substitution effect is greater than the income effect, then it is sloping upwards. And when income effect is stronger than the substitution effect, तो bend backwards होता है. ठीक है. So ये आंसर है bend backwards. The backward bending labor supply curve is frequently tested in factor market. Factor market में बहुत आता है ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं. ओके. वीएमपी वर्सेस एमआरपी इन इम्परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट. ठीक है, उसका एप्लीकेशन है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड ट्रू फॉर फैक्टर प्राइसिंग व्हेन द फैक्टर मार्केट इज परफेक्टली कंपेरेटिव and the product market is monopolistic? Factor market is competitive, product market is monopolistic. VMPL is greater than MRP. अच्छा, both VMPL, both VMP and marginal revenue product is decreasing. ये तो सही है. यहाँ पर उल्टा होना चाहिए. MRP should be greater than VMPL. Marginal revenue product, because marginal revenue is greater than marginal revenue product. Oh, sorry. These should be equal. Marginal revenue is equal to marginal cost. VMP या MRP should not be greater than or less than. ये दोनों तो equal होना चाहिए. Okay. तो ये तो equal होगा. Right? And ये तो सही है. VMP is MRPL is equal to W. Okay. Price into marginal product. This is MR into, oh, sorry. Price into marginal product, MR into marginal product. तो यहां पर क्या होना चाहिए? Price into marginal product. Price is greater than MR because MR is equal to MC. Sorry, I thought that MR and MC. नहीं. VMP is price into marginal product.
ये दिस इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, ए बी एंड डी आर ऑल करेक्ट। तो क्वेश्चन 14 के बाद में क्वेश्चन 15 में चलते हैं ये मैराथन में। डेफिनेशन ऑफ परेटो ऑप्टिमैलिटी। परेटो ऑप्टिमम इंप्लाइज, ये ऑप्शंस को अच्छे से देखिए। ओके, अब परेटो ऑप्टिमैलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है व्हेन इट कम्स टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, और ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि विल्फ्रेड परेटो 1906 में इज समटाइम्स कॉल्ड द फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, क्योंकि परेटो एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट के बाद ही उसके ऊपर में बिल्ड अप हुआ है, बट द ओरिजिनल इज द परेटो ऑप्टिमैलिटी या परेटो एफिशिएंसी का डेफिनेशन। So Pareto optimum implies a resource allocation which is a Pareto improvement, ये नहीं, Pareto optimality वो नहीं है। Resource allocation in which social improvement नहीं, social improvement is something that we came later on with the Calder Hicks and the social welfare utilitarian and Rawlsian utility theorems. Resource allocation in which at least one is better off and nobody else is worse off, so for which there are no Pareto improvements. तो Pareto optimum किसको बोलते हैं? Pareto optimum किसको बोलते हैं? Pareto optimum, Pareto efficient बोलते हैं resource allocation for which at least one is better off and no one else is। Pareto improvement इसको बोलते हैं at least one is better off and nobody else is worse off। Pareto optimum बोलते हैं there are no Pareto improvements possible। Pareto improvement is C, Pareto optimum is D। ओके, अब 16 में चलते हैं। 16 असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए। मॉरल हजार्ड वर्सेस एडवर्स सिलेक्शन मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है। जुलाई 2018 इज वन ऑफ द इयर्स व्हेन इट हैज कम। व्हेन एन information asymmetry is observed after an agreement is obtained between the individuals, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मॉरल हजार्ड। सिग्नलिंग उसको बोलते हैं जहां पर कोई अपने कैपेबिलिटीज को सिग्नल कर रहा है, मतलब कि लेस इन्फॉर्म्ड पार्टी को सिग्नल दे रहा है मोर इन्फॉर्म्ड पार्टी, पर्टिकुलरली इन द जॉब मार्केट, जहां पर इंसान अपने क्वालिफिकेशंस को एज अ सिग्नल देता है दैट ओके यू शुड हायर मी बिकॉज आई हैव डन सच एंड सच। सो इट्स बेसिकली दैट सिग्नलिंग। ये तो मॉरल हजार्ड है। Okay, so the distinction between adverse selection, which is pre-contractual information, and moral hazard is basically post-contractual information asymmetry, is a consistently tested concept in market failures and symmetric information। ये हो गया 16। अब 17 में चलते हैं। 17 is basically match the following, list one and list two। List one में low quality of goods can drive high quality of goods out of the market। Okay, and we have to basically say कि कौन सा है ये प्रॉब्लम। ओके, सो ये आपको करना है। सो प्लीज टेक अ लुक। लो क्वालिटी ऑफ गुड कैन ड्राइव हाई क्वालिटी ऑफ गुड आउट ऑफ द मार्केट, ये एकरलॉफ ने बोला था लेमन्स प्रॉब्लम से। ओके, फिर उसके बाद में आ जाते हैं a party whose actions are unobserved can affect the probability or magnitude of a payment। Okay, individuals tend to value an item more when they own it than when they do not। ये हो गया endowment effect। And preference of government is to make sustained expenditure।
ratchet effect, ये तो a party whose actions are unobserved can affect the probability or magnitude of a payment. Moral hazard after contract हुआ ना, आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मॉरल हजार्ड हुआ. A3B1, A3B1 आंसर हो गया सी. ठीक है. Question 18, Nash equilibrium definition. Nash equilibrium is representing what? So again a very important concept जो आप लोग सबको को आना चाहिए अच्छे से. इसका क्या आंसर है सोचिए, पॉज द वीडियो एज आई सेड अर्लियर और करिए. Nash equilibrium is the outcome each time the game is played. We may not have a Nash equilibrium. Long run equilibrium होता है situation where no player can deviate profitably given other strategy. सही है. Best response of the first mover. नहीं, simultaneous move game है. Pair of the dominated dominated तो नहीं होगा, dominant हो सकता है. B and C, B and C only. ये हो गया आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं. 7 और क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 19 जून 2024 में एक बार फीचर हुआ है एंड मल्टीपल अदर टाइम्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज सेटिस्फाइड फॉर फिशिंग इन एन ओशन. फिशिंग इन एन ओशन इज नॉन एक्सक्लूडेबल बट इट इज राइवल. ये आंसर होगा बी. राइवल है क्योंकि if you take out a lot of fish, the others will not get that, right? So rival hai. So understanding public good, common pool, resources and private goods is a foundational concept in market failure. तो ये समझना जरूरी है कि कौन सा गुड कैसा टाइप का है. अब एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 में आइए. 20 देखिए क्या है. Assumption of the arrow impossibility theorem. Responsiveness to individual preferences. ओके. इम्पोजिशन नॉन डिक्टेटरशिप है. डिक्टेटरशिप नहीं. ट्रांजिटिविटी है. इंडिपेंडेंट और रेलेवेंट ऑल्टरनेटिव्स है. रिस्पॉन्सिवनेस टू इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस भी है. सो इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को कंसिडर किया जा रहा है इन द सोशल वेलफेयर फंक्शन. सो एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम बेसिकली सेट जो 5 बड़े बड़े कंडीशंस है which a social welfare function should satisfy, all of them cannot be satisfied at the same time. Okay, 3 or more cannot be satisfied at the same time. That is what he said. So impossible है to satisfy all the 5 good properties of a social welfare function. That is the arrow's impossibility theorem. So यहाँ पर आंसर है A, D and E only. So arrow's impossibility theorem multiple times पूछते हैं UGC नेट वाले. ओके. इट्स सोशल चॉइस थ्योरी एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स में काफी बार पूछा गया है. ये एक्सियोम्स पे ही काफी क्वेश्चंस आए हैं. फर्स्ट फंडामेंटल वेलफेयर थ्योरम. फर्स्ट फंडामेंटल वेलफेयर थ्योरम क्या है? एनी कंपैरेटिव इक्विलिब्रियम इज कोएफिशिएंट. तो 21 में रिक्वायरमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए फॉर द फर्स्ट वन फंडामेंटल थ्योरम टू होल्ड. प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स प्राइस टेकर्स होने चाहिए. परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, राइट. इकोनॉमी ऑपरेट एट सम पॉइंट ऑन द यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व. हाँ, क्योंकि यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व पर ही तो परेटो एफिशिएंसी होता है. एफिशिएंट मार्केट फॉर एवरी. हाँ. सो आई हियर आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द. ये तीनों ही होना चाहिए रिक्वायरमेंट the first fundamental theorem to hold. Fundamental assumptions, price taking behavior, complete markets. Complete market का मतलब कि each and every good has a market. ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा गुड है जिसका कोई मार्केट ही नहीं. चलो 22 देखते हैं.
रिस्क अवर्स बिहेवियर पे ये क्वेश्चन है, विच मेथड इज कंसिस्टेंट विथ रिस्क अवर्स बिहेवियर? If two strategies have the same expected profit, select the one with smaller standard deviation. ये है ना risk averseness. If two strategies same standard deviation, select the one with smaller. अरे क्यों भी? If two strategies have the same standard deviation, select the one larger coefficient of variation. ये कहाँ से आ रहा है? If two strategies have different expected profits, select the one with the larger standard deviation. नहीं भाई. Standard deviation होना चाहिए कम and expected profit is the same, then I will go for that as a strategy. Risk averse individual ज्यादा variability पसंद नहीं करता है. It likes certain outcomes vis-a-vis an unexpected outcome. Okay? So ये uncertainty का cornerstone है risk averse behavior का modeling या understanding. Okay? अब 23 को देखते हैं. Okay. 23, 24, and then 25. Cobb-Douglas production function Q is equal to A L to the power A K to the power 1 minus A. ये ऐसे लिखा जाएगा. Is not characterized by constant returns to scale है, unit elasticity of substitution है, unit elasticity of substitution variable नहीं है, तो not characterized by linear homogeneity है. Elasticity of substitution हमेशा equal to 1 होता है when it comes to Cobb-Douglas. ठीक है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता है. Properties of excess demand or Walras law. Which among the following are true for excess demand function for an individual? Homogeneous of degree 0 होना चाहिए, हाँ जी होना ही चाहिए for any demand. Price illusion नहीं होना चाहिए. They obey Walras law होना चाहिए. Walras law क्या है? That invisible hand, that all the markets are in equilibrium together. N minus 1 markets are in equilibrium and nth market automatically in equilibrium. Both A and B are true. यहाँ पर आंसर होगा ये. अब एक लास्ट वाले प्रॉब्लम को देखते हैं in terms of important questions. Bertrand duopoly model. In which oligopoly model firms produce homogeneous goods and each firm treats the price of its competitors as fixed and all firms decide simultaneously what? तो Bertrand model है ही यहाँ पर दिया हुआ ही है. The point is that you should know all these models. Cournot model is a quantity rivalry model. Stackelberg is a leader follower quantity model. Sweezy model is a king demand curve model. ये सारे models आपको आने चाहिए. And that is what it is. So I hope that ये जो PYQ का मैराथन था ये आपको कुछ insight दिया into how you should be preparing for your microeconomics. These are the important questions. ये questions को भूलिएगा मत and please do them very well. And if you have been able to answer most of them on your own, that's a very good sign. That's an extremely good sign. मतलब कि आपका preparation सही दिशा में है. चलिए अब हम लोग next unit पे जाएंगे. And I'll be seeing you very soon. Hi everyone. So now let's go over the 20 most important questions for macroeconomics for UGC NET. Alright, so the first we come to an NIA question where the concept of deflator is very important. So when nominal GDP is 11,000 and the real GDP is 10,000, what's the GDP deflator? So we know that the GDP deflator is going to be the nominal GDP, so 11,000 divided by the real GDP, which is 10,000 into 100. Right? So this is coming out to be 110. So the answer is D for this. Then the next question again from NI is which of the following questions represent the national income identity? Is it C plus I plus G plus NX, which is option C? This is the expenditure method. All right, now let's move on to the next topic. So next question is from the classical model. In the classical macroeconomic system, money determines which of the following? Does money determine output in prices, employment in prices, output and employment in prices? So output is not determined by money in the classical system. Employment is not determined, output is not determined. Only prices are determined by the classical system, by money.
All right, so that is a very important topic. And a similar question, what is the classical dichotomy? Classical dichotomy refers to which of the following? There are two sectors in the economy. Influence of money is not on real variables like employment and output, but on price level. So again, in the classical model, the QTM and the neutrality of money are the most important concepts. Then let's come to the next question. Adam Smith advocated which of the following? So Adam Smith talked about laissez-faire, invisible hand, free trade policy, comparative markets. Which of them or all of them? So actually, Adam Smith talked about all of them. They all are important to achieve the kind of system, the kind of free market capitalist system that Adam Smith talked about. So the answer is D, all of the above. Now let's go to the next question. So arrange the following in the chronological order, starting, so this is a question from money, theory of money demand, starting from oldest to the latest. So the oldest theory would be from Patinkin, Fisher, Friedman, Marshall, and Keynes. So Fisher came up with the first theory, then what Marshall's cash balances approach, then would be Keynes's theory of liquidity preference, then was the Patinkins, and then was Milton Friedman. So this would be option B. Who said inflation is everywhere and always a monetary phenomena? Very important question, and that was Milton Friedman. So that is this will be Milton Friedman, option C. All right, then again another question on Milton Friedman's monetary policies. According to Milton Friedman, the permanent component of consumption expenditure depends on. So this is consumption theories, a question on consumption theories. And according to Milton Friedman, the permanent component of consumption dependent only on permanent income alone. So that would be option C. Then the next one, according to life cycle theory of consumption, an individual's level of consumption depends not just on current income, but also on long-run expected earnings. The reasons, because individuals are assumed to plan a pattern of expenditure based on expected earnings over their lifetime. So this is exactly what the life cycle consumption theory states. So both A and R are correct, and R is the correct explanation. So this is question 9. Then we have the next, which is question 10. Suppose the initial equilibrium level of GDP is 100,000 billion. So now this is an NIA question, right? The initial, this is an SKM question. Initial GDP is 1,000 billion, MPC is 0.75, G increases by 100, then the expenditure multiplier and the new level of GDP. So the multiplier is 1 by 1 minus C. So this is going to be 1 by 1 minus 3 by 4. So this is going to be 4. The multiplier is going to be 4. And if you multiply 4 by 100, that's going to be 400. So 1,000 plus 400 is going to be 1,400. So D is the answer for question number 10. Now moving on to the next question. This is also related to thing SKM. Instantaneous, to match the following, instantaneous adjustment of income with investment spending occurs in. So this would be the static multiplier. Consumption lags by one period. So lagging of consumption in one period, this would be the dynamic multiplier, which includes the lag. The value of investment multiplier is 0 when increase in investment expenditure is once and for all. And then you have D here. So option B is the right answer. So static and dynamic multipliers are also have been asked by quite a lot. Then the next question, according to Keynes, individuals hold either cash or bonds, which is correct. And because according to him, the speculative demand for money is associated with uncertainty, that is also correct. That the speculative demand for money is associated with uncertainty with respect to money demand. But would this be the correct explanation? I mean, R is also correct, that speculative demand for money is uncertain. But because of that, do they hold all cash or bonds? So they hold all cash or bonds depending on what is their profit motive. Where do they see more profits? Do they see more profit in holding cash, or do they see more profit in holding bonds? So though
R is correct, but it does not seem to be the correct explanation. So B is the right answer for this one. All right, then next. In the extreme case of liquidity trap, there will be a tendency to buy bonds. Most investors show bearish behavior. Cash will be less preferred and price of bond will be low. So when there is liquidity trap, basically people don't really want to invest and they want to hold everything that they have in cash. So investors will not invest, which means they will show a bearish behavior. Let's move on to the next question. Now, a lot of questions in the ISLM model in UGC comes on the slopes of the IS and the LM curves. So that is very important. All right, so which of the following statements is false? The IS curve is flatter, lower the value of the multiplier. So this is the IS and this is the LM, and we are saying that flatter is the IS curve. This is IS, let's say 0. This is IS 1, and this is LM 0. So flatter is the IS curve, lower is the multiplier. So the multiplier is actually more in case of the IS curve because there's a larger increase in Y and a lower drop in R. So actually the statement is not true. The steeper is the IS, the less effective it is, and the flatter is the IS, the more effective it is. So A, which of the statements is false? So A is false. So we need to know the slopes of the IS and the LM curves very well to solve these kind of questions. Next question, in the Keynesian framework at full employment, which of the following are true? The supply curve in the short period is inelastic. The supply curve is inelastic in the short run. Is this true? Yes, in the supply curve, AS is horizontal, right? So that is true. Supply is influenced by increasing quantity of money. No, money doesn't have, it increases actually demand and not supply. So B is incorrect, A is correct. So only A is true. Let's move on to the next question. Assume that an economy begins in macroeconomic equilibrium, then taxes are significantly decreased. As a result of this change, there's expansion and deflation. No, there's expansion and inflation because AD will shift out. So C is the right answer for this question, which is on the AD curve, aggregate demand curve. All right, next coming to a question on Phillips curve. So AW Phillips wage inflation unemployment trade-off is based on adaptive expectations and not static or rational. So that is based on adaptive expectations. Next, a lot of questions do come on books and who wrote what and what came out first. So this is a question where what is the order in which these books came? And so the theory of moral sentiments came first, and then it was an inquiry into the nature and causes of wealth of nations. So D is the right answer as given. Then it is capitalism, socialism, democracy. So we've given notes on all of this, that what is the order, who wrote this book, when was it written and everything. So these kind of questions can be answered with that. Then, which of the following do not hold true in the case of Keynesian economics? And this is, I think, about new Keynesian economics. Velocity of money is unstable function. This is does not hold true. This actually is true. So that means that's not the right answer. Labor is subject to money illusion, efficiency. That is also true. So not the right answer. Aggregate supply functions tend to become flat at levels of output below full employment and steep. So this is also correct. So not the right answer. Aggregate supply is vertical. And output and employment are completely supply determined. This is the classical notion, not Keynesian. So D is the right answer. And now let's move on to the last question. This is on business cycles. For particular high values of MPC and the accelerator coefficient, explosive non-oscillatory cycles will appear in the model of the business cycles propounded by. So this is the Samuelson theory of trade cycles. So the answer is Paul A. Samuelson. So that is A. So this concludes a roundup of some of the important questions and what type of questions you can expect in your exam. We try to keep a mix of different kinds of questions that come. Hope this was helpful. Study hard, do your revision well, and all the best for the exam. Thank you, everyone. Bye-bye. Hello everyone, how are you all? This video is dedicated to solving previous year questions, some important previous year questions of mathematical economics which have appeared in UGC NET GRF examination of economics.
and this will help you, understand the pattern of questions and ace the examination. So welcome to the channel, and let's start. So UGC NET 2024 June paper, question number 93. The production function Q is equal to Lk upon L plus K is homogeneous of degree 1, homogeneous of degree 0, homogeneous of degree 2, homogeneous of degree 1 by 2. So to attempt this question, you should know what is a homogeneous function. So if f is a function of two variables, okay, it is called homogeneous of degree n if for any lambda, which is a constant, f lambda x lambda y is lambda power n fxy. Okay. Now in this particular question, we have a function q, which is a production function which depends on labor and capital, and this is equal to Lk upon L plus K. So they are asking you about the degree of the homogeneous function. That means it must be a homogeneous function. So let us talk about Q lambda L lambda K. That will be lambda L into lambda K divided by lambda L plus lambda K. So that will be lambda square Lk divided by lambda L plus K. So it is lambda power 1 QLK. So here n is equal to 1. So this particular production function is a homogeneous function of degree 1. Option number 1 is the correct answer for this question. So this is a question based on a homogeneous function and its degree. The next question is question number 95. The quadratic form ax square plus by square plus 2hxy is negative for all the values of x and y if and only if. Okay, so basically they are corresponding to negative definite matrix. So this particular quadratic form is related to the matrix A P H H. This is the matrix. So when is a matrix negative definite? When the first root minor, so the first root minor A, when it is negative, and the second root minor, that is the entire determinant, is positive. So AB minus H square is positive. So H square minus AB is negative. So we should have A negative. So this goes away. This option goes away. And we should have AB minus H square positive. So here it is AB minus H square negative. Wrong. Here it is AB minus H square positive. Correct. So this is the definition of negative definite matrix. So this question is basically on quadratic form and how the quadratic form is related to a matrix and its nature of negative definiteness. So whenever you're asked a question about the positiveness or the negativeness of a quadratic form, you have to go to the concept of positive definite and negative definite matrix. The next question is a simple question on planes. So position of points 0, 0, P2 minus 3 in the region of the graph will be O inside, P outside. Okay, so basically we have a region 2x minus 3y less than or equal to 5. So if I want to see what this region looks like in a 2D plane, what I will do, I will draw the line first. Okay, so if I want to draw the line, let me put some convenient points. So to draw a line, we need 2 points. So let's put y equals to 0. If y is 0, x is 5 by 2. And if x is equal to 0, y is, so if x is 0, y is minus 5 by 3. So this is the line. Now I will have to make a dashed line because we are talking about strict inequality in this particular case. So this equation will not be included in the solution. All right. Now what is happening is that, so let me see which region is this. Is it above this line or below this line? So let us, choose a test point. This is 0, 0. So put 0, 0 in this inequality. 0 minus 0 less than 5, 0 less than 5, true. So therefore, my feasible region is this region above this dashed line. Okay. So they're asking you position of points
0, 0 and 2 minus 3. So 0, 0 is, lying over here, that is outside. And look at P. So this is inside the graph because this is my graph. So 0, 0 is inside. So, and let us look. So this option goes away and this also goes away. Now look at P2 comma minus 3. So again put in the inequality. 2 into 2 minus 3 into minus 3, which is nothing but 4 plus 9, which is 13. Is 13 less than 5? No. So therefore this is wrong. Okay. So therefore 2 comma minus 3 is outside. Okay, so O is inside, P is outside. Option number 1 is the correct answer because when I plot 2 comma minus 3, I'll be somewhere over here. This will be my 2 and this will be my minus 3. So the point is here. So which is outside this inequality. The pink shaded region is the solution to this inequality. So option number 1 is the correct answer. This is just about plotting a half plane. So what you have to do, you have to plot the line. The line has to be dashed because it is not included. And then you have to see which region you have to shade. So the shaded region will be inside region and the non-shaded region will be the outside region. That is how you tackle such a problem. The next question is on finding the derivative of the function because you are given a function y equals to 1 plus x upon 1 minus 2x and you have to find out dy by dx. So that is you have to find out the derivative. So you can see this is something upon something. So we will think about quotient rule. So if y is equal to u upon v, so dy by dx is nothing but v square v dv by dx minus u dv by dx. This is what we have to follow. So here your dy by dx will turn out to be 1 minus 2x square, 1 minus 2x d by dx of 1 plus x, which is 1, minus 1 plus x d by dx of 1 minus 2x, which is minus 2. So it will be 1 minus 2x minus 2 plus 2x divided by 1 minus 2x whole square. So this is gone. So this has to be uh so okay minus okay. So this has to be 3 upon 1 minus 2x whole square. So option number 2 is the correct answer for this question. Very simple question on differentiation. If you are expecting a question on differentiation and integration in UGC NET examination, it has to be very simple. It will not be very complicated. So you have to stick to your basics. You have to remember the standard formulae and then you have to proceed carefully. So the next question is UGC NET 2022, question number 51. This is a question on set theory. So very simple question again. If A, B and C are three different non-empty sets, then which of the following are correct in laws of set operation? So the first is A intersection empty is empty. Obviously, any set which is intersecting with an empty set will give the empty set. Because what do you mean by intersection? Intersection means common elements between A and empty set. So there are no common elements, therefore the intersection will be empty. So A has to be the correct answer. Also, A intersection A complement is empty. So what do you mean by A complement? A complement means which is not in A. So we cannot have elements which are common to A and not A. And therefore, this is also a correct statement. The intersection is empty. So A and C are correct. Okay. Now, the second statement, A intersection B union C is A intersection B union A intersection C. This is correct because these are called distributive laws of intersection and unions. So if I have a bracket, then this particular operation will be distributed between both B and C, and in between I'll be having a union sign. So even B is correct. Okay. So wherever you don't see B, you just cross it. Okay. And C is also correct. So if you look at E, A union B complement is not equal to A complement union B complement. In fact, this is a De Morgan law which says A union B complement is A complement intersection B complement. So if I want to remove the bracket,
and take this complement side inside the sets, this operation of union has to be interchanged with the operation of intersection. Similarly, had it been like this, A intersection B complement, it would have been A complement union B complement. So E is wrong. So wherever is E, you remove it. So the only correct choice that you have left is A, B, and C only. So option number 4 is the correct answer for this question. Again, you can expect question on set theory where they will not ask you very hi-fi things, but you should know what is an empty set, what is a union, what is an intersection, what are De Morgan's law, what are distributive laws. So these basics are very important because they only hit at your basics. Again, in 2022 December, shift 2 paper, we have one more question on set theory. So again, A, B, and C are three different non-empty sets. Then which of the following are correct in laws of set operations? A complement is A, true. So A is true. Okay. A union B is 1 minus A intersection B. What is 1? The universal set. So suppose this is your universal set. This is A, this is B. So this is A union B. Okay. This is the diagram of A union B. And what they are saying, the another set is universal set minus the intersection. So universal set minus the intersection will be this set. So are these two sets equal? This is 1 minus A intersection B. So are these two sets equal? No, they are not equal. So B is wrong. So wherever is B, remove it. Okay, C. A union bracket B union C. This is associative property of union of sets. So we can, shift these brackets anywhere if the operations are same. So C is correct. Okay. Now we have A, D and E will be deal breakers. So what is D? A union B intersection C is A intersection B union A intersection C. This is a wrong distributive law. It should be A union B intersection A union C. So D is wrong. Therefore, the second option has to be correct. Let's look at E also. A minus B is A intersection B complement. Very correct. So if you look at the diagram, this is A, this is B. A minus B means remove the elements of B from A, which is this. And A intersection B complement means the common elements between A and not B. So what is not B? Not B is this. This is not B. And what is A? A is this. So what are the common elements? If you look at the common elements, it is going to be this. And this is nothing but A minus B. So E is in fact correct. And therefore option number 2 is the correct answer. Again, very simple questions on set theory. They can be tackled with common sense and using Venn diagrams wherever. So again, UGC NET December shift. Okay, shift 2. So question number 69, you have to match the list 1 with list 2. That means you have to match the options in list 1 with the options in list 2. So linear function. And so the graph of a linear function will always be a line. Okay. So A should be mapped with 4. So A should be mapped with 4. So wherever A is not mapped with 4, remove it. Then the quadratic function, which are easy, let's tackle them first. So quadratic function is always a parabola. So what is a parabola? It is inverted U or up U, something like this. So B should be mapped with, C should be mapped with 2. Okay. So wherever C is not mapped with 2, remove it. Okay. Okay. So let's look at B. Exponential function. Exponential function is always increasing. So this one. Okay. So B should be mapped to 1. So this this option number 3 is the correct answer. And cubic function is always an S-shaped function. So you can see we are making an S over here, and therefore D should be mapped to 3. So these are simple observations. You should know how the graph of a linear function, a quadratic function, an exponential function, and a cubic function look like. Okay. So this question can be very well attempted using your basic concepts of graphs.
The next question is from December 2023 paper. So question number 81, if this is the matrix and this is a matrix, which of the following is not correct? So A transpose B. So what is A transpose? 2, 3, 0, 4. And you're multiplying with this. So matrix multiplication 2 times 2, 4. Then 0. Then 3 2s are 6 plus 4, 10. 3, 0, 4 5s are 20. So this is correct. Okay. So this cannot be my answer. Then A plus B transpose. So let us add these two. So you will get 4, 3, 1, 9, and let's take transpose. So 4, 3, 1, 9. So this is correct. So this cannot be the answer. A transpose B. A transpose B is not equal to this. So this is my incorrect answer. And let us verify this. A transpose B transpose. So A transpose is 2304. B transpose is 2015. Let's multiply them. 4, 2, 6, and 23. Yes, this is correct. So even this cannot be the correct answer. This is a very simple question based on transpose definition and matrix multiplication. If you know these two, you will be able to attempt this question. So again, December 2023 paper, question number 105. Let H is equal to E bar Q, where Q is A x alpha y beta. Consider the following statements. Q is a homogeneous function for all values of alpha beta. H is a homothetic function for all values of alpha beta. Q is a homogeneous function if and only if alpha plus beta is 1. H is not a homogeneous. Q is not a homogeneous. Choose the correct options. So let us look at Q. Q is a function of x and y. So it is ax alpha y beta. So q lambda x comma lambda y will be a lambda x alpha lambda y beta. So this is a lambda alpha plus beta x alpha y beta. So this is lambda alpha plus beta a x alpha y beta. So this is lambda alpha plus beta qxy. So in fact, this is a homogeneous function. Q is a homogeneous function of degree alpha plus beta. So Q is not a homogeneous function. E has gone. So E has gone. Okay. And Q is a homogeneous function if and only if alpha plus beta is equal to 1. C has also gone. Okay. So now we need to check B and D. Okay. So H is not a homogeneous function. So let us see H is equal to E power Q. So H is equal to E power A x alpha y beta. So if I write H lambda x lambda y, it will be E power. So again A, it will be lambda alpha plus beta Q. So I cannot write it as lambda alpha plus beta E power Q. That's not possible. So H is not a homogeneous function. So D is wrong. So therefore only A and B are supposed to be correct. So let's look at B. H is a homothetic function. What is a homothetic function? Homothetic function is a monotonic transformation of a homogeneous function. What does it mean? It is composition of a monotonic function and a homogeneous function. So H is equal to E power Q. So if F is equal to, E, Fx is equal to E power X. So then we can see that H is equal to F of Q. So which is nothing but E of Q. So you can see that this is a monotonic function. Monotonic means increasing or decreasing. So exponential function is an increasing function and Q is a homogeneous function. We have seen that. So this is a composition of a monotonic function and a homogeneous function. So therefore H is a homothetic function and it is happening for all the values of alpha and beta. Therefore option number B is the correct answer and therefore we have marked option number 1. This is a very good question again, homogeneous and homothetic functions. So again in the same paper 2023, question number
106. A and B are given. We have to choose the correct answer from the options given below. See, matrices are very common. They are being frequently asked. So the order of the matrix is there are 3 rows and 2 columns, and B has 2 rows and 1 column. So AB is defined because the number of columns in the first one is equal to the number of rows in the second. So AB, let's calculate AB. 132840, and B is 59. So this is a 3 by 2 matrix. This is a 2 by 1 matrix. So the resultant matrix will be 3 by 1. So we need 3 rows and 1 column. So 1 into 5 plus 3 into 9, and that's going to be 32. 2 into 5 plus 8 into 9, so that is going to be 82. 4 into 5 plus 9 into 0, that is going to be 20. So A is correct. So this has gone. Okay, so let's look at, now we have A, D, E, A only, A and D only. So let's look at D. BA is not defined. So what is the order of B? 2 cross 1. And what is the order of A? 3 cross 2. The number of columns in B is not equal to the number of rows in A. Therefore, BA is not defined. So D is correct. So this has also gone. So now we have to, toss between 2 and 4. So let's go to option number E. A transpose B is defined. So A transpose B. So A transpose का order होगा 2 by 3. And the order of B is 2 by 1. So again, this number of columns is not equal to this number of rows. So therefore, A transpose B is not defined. So this has gone. So option number 4 is the correct answer. Again, this question is dependent on basics of matrices. Okay. So again, December 2023 paper, question number 110. A very good question. It is, touching different concepts. So a matrix A. So we are talking about characteristic polynomial. So there you are given so many characteristic polynomial. Let's see which one is the correct one. So what is a characteristic polynomial? It satisfies the equation determinant A minus lambda I is equal to 0. So A minus lambda I will be a determinant. So first of all, let us calculate what is A minus lambda I. 3, 5, minus 2, minus 4, minus lambda I. So lambda 0, 0, lambda. Lambda is the identity matrix. So this is 3 minus lambda, 5, minus 2, minus 4, minus lambda. Now the determinant of this matrix is 0. So 3 minus lambda, minus 4 minus lambda, minus 5 into minus 2 is equal to 0. So we have 4 plus lambda, lambda minus 3 plus 10 is equal to 0. So this is 4 lambda minus 12 plus lambda square minus 3 lambda plus 10 is equal to 0. So lambda square plus lambda minus 2 is equal to 0. So the characteristic polynomial is lambda square plus lambda minus 2 is equal to 0. So this is a polynomial equation. So this is the polynomial. So this is a wrong and this is also wrong. Okay, so A, which of the following are correct? So wherever B and C are there, let's cut them. Yeah. So you can see that just by calculating the polynomial, you have found your answer A and D only. But let's, discuss what are characteristic roots or, eigenvalues. So how do you find out roots? By solving this equation. So lambda square plus 2 lambda minus 2 is equal to 0. Lambda plus 2 minus 1 lambda plus 2 is equal to 0. So lambda minus 1 lambda plus 2 equals to 0. So lambda equals to 1 comma minus 2. So therefore, the characteristic roots are found out. Okay. So again, December 2023, question number, this is 112, a very good question. Consider the following statements. Union of finite number of closed sets is closed sets.
So whenever you have closed sets and open sets, so any finite union intersection closed. Open sets, finite union intersection open. So union of finite number of closed sets is closed sets true. So wherever A is not there, cut it. The intersection of finite numbers of open sets is an open set true. So wherever D is not there, cut it. See, you got your answer. 3. You don't even need to check the other options, but let's check them. The empty set is an open set but not a closed set. Wrong. An empty set is an open set as well as a closed set. Okay. Every infinite set is an open set. Wrong. So all the countable infinite sets are not open. For example, the set of natural numbers, it will never be open because it is countable. I can count the elements. Okay. So any discrete infinite set is not an open set. So even C is wrong. In the same question paper, question number 115. Consider following 3 constraint optimization problems. Maximize z is equal to log x subject to x greater than 1, subject to x less than 1, subject to 1 less than x less than 2. Okay. Remember one thing, that log x is an increasing function. Okay. So when x is greater than 1, log x is unbounded. I will never be able to know that what is the maximum value, because x is greater than 1. I will keep on increasing x, log x will keep on increasing. Therefore, we will not be able to find out the solution. Okay. So A and B have solutions. Okay. Then maximize z is equal to log x subject to x less than 1. First of all, log x is only defined for positive numbers. So it automatically means that 0 is less than x is less than 1. Now log is an increasing function. Therefore, log 1 should be maximum. But it is never attained. Why? Because 1 is not included in the interval. So we don't know what the maximum value will be, because we have an open interval and log x is increasing, but we don't know what is the final value, for final domain value, because the interval is open. So we don't know what is the number which is immediate to 1 on the left of 1. And therefore, we'll never be able to come up with a maxima over here. Similarly, in option number C, we'll never be able to come up with a maxima, because we know that log is an increasing function. So log 2 should be maximum in this interval. But again, 2 is not there in the interval. So we don't know what is the immediate real number left of 2. So therefore, all these equations will not have a solution. So option number C is the correct answer. Okay. So you don't do this by maxima minima. You just do it by observing the graph of log x. And if you know its property, you'll be able to attempt it. Hello everyone, and I welcome you all to this marathon PYQ session of UGC NET by EduSure. Already we have covered a marathon series last week, which actually covered all of your important topics related to UGC, all 10 minutes in one video. Today we will be covering the same 50 PYQs. So I'll be covering your public economics, followed by your environmental economics. So first we deal with all the important PYQs of your public economics, right? And then we will move forward to the environmental economics. So let's get started. Okay, quickly we'll solve all the PYQs. I have handpicked 20 most important PYQs of public and 20 most important, not important, I would say, but which would actually cover all your important concepts in this kind of thing. Okay. So the first question is basically I have also attached the year for the reference. Which of the following is a characteristic of a pure public? तो हमें public को पता है क्या होता है, which is neither rivalrous नॉट एक्सक्लूडेबल. आप ना उसको राइवलरी कर सकते हो, ना आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो इकोनॉमिक्स, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव अटैच्ड द करेक्ट ऑप्शन as well as the explanation also, in case you are not able to understand what was the correct explanation it was to, you can always come back to the question and refer it. Okay, this way we will move forward. Question 2 talks about that the free rider problem in most of the economies occur due to what? So basically, हमें पता है free rider problem क्या होती है? Somebody who is availing benefits of the public good, or somebody who is availing the benefits of the good which is generically available without actually paying for that good. That goods are actually a public good, or that is your actually free rider, right? So this happens basically in which goods? In public goods it happens. Why? Because we have already studied that, because they are, since you cannot exclude anybody and you cannot cause a rivalry, that is why public goods are the reason जहाँ पे rivalry होता है.
Okay, so moving forward to question number 3. Question number 3 talks about, according to Samuelson condition for optimal provision of public goods, what should be the condition? So basically what happens, Samuelson का आपको condition आपको explain करता है कि आपको अगर optimal public good चाहिए, when it actually happens that is sum of the MRS, marginal rate of substitution, is equal to marginal rate of transformation. जब आपको ये situation आ जाता है, then you actually get the optimal provision. The correct option is option number B. Sum of the individual MRS should be equal to the marginal rate of transformation. So the correct option is option number B. Moving forward, question number 4. Question number 4 talks about which of the following best describes a merit good. Merit good आप किसको बोलो, right? So basically merit goods आपके वो goods होती है. Merit good क्या होगा? If I give you an example, education, right? Or probably health. Merit goods आपके वो goods होते हैं which are consumed by individuals due to the myopic vision of the people, right? But society will actually benefit from these goods only when it is consumed in a larger extent, right? So that it is available to the more public. So a good, so what will the possible answer to it? A good which is under consumed by individuals from society's perspective. Because जितना ज़्यादा इसको society को consume करेगी, इसका मतलब क्या है? उतना ज़्यादा population को ये good मिल रहा है, तो उतना ज़्यादा इसका consumption benefit will actually, it will give you consumption benefits. So the correct option is option number B. Okay. Forward to the 5th question. The excess burden of taxation is also known as what? So excess burden of taxation को हम क्या कहते हैं? तो taxation का जो burden होता है, tax incidence is the one जिसके ऊपर tax fall करता है, तो ये नहीं होता है. So excess burden of taxation is nothing but the deadweight loss. क्यों इसको deadweight loss बोलते हैं? क्योंकि आपका जो excess burden होता है, also if we can talk it in terms of deadweight loss, basically आपका क्या represent करता है? What is the efficiency of loss from the taxation, right? And henceforth taxation. And henceforth it reduces your economic welfare beyond when the tax are actually conducted, because they actually call distortion in the society. Correct option is option number B. Okay. So moving forward to question number 6. Question number 6 talks about, according to the principle of horizontal equity. Horizontal equity का क्या मतलब होता है? That people of the similar stature are treated similar. ठीक है? तो according to horizontal equity, so who have higher income should pay higher taxes. So ये तो vertical हो गया, ये नहीं होगा. Those who in similar circumstances should be treated similarly. So correct option is option number B. Okay. Moving forward to question number 7. A regressive tax system is what? So regressive tax system हमें पता है क्या होता है कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टैक्स कम लगे. This is a regressive tax system. So tax decreases with income. The correct option is option number B. The Laffer curve demonstrates. So Laffer curve आपका basically अगर हम बात करें, it's an inverted U shape. So it shows your tax rates and tax revenues कि एक पॉइंट तक तो रेवेन्यू एंड टैक्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट उसके बाद जैसे जैसे आपका रेवेन्यू टैक्स रेट बढ़ता जाएगा, सॉरी, जैसे जैसे आपका टैक्स रेट बढ़ता जाएगा, इवन देन योर रेवेन्यू विल स्टार्ट फॉलिंग. टैक्स रेट्स एंड टैक्स रेवेन्यू. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. Moving forward to the question number 9. Question number 9 talks about which tax is considered most efficient in terms of economic distortion. So कौन से टैक्स को इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन को बचाने के लिए या बचने के लिए मोस्ट एफिशिएंट समझा जाता है? So lump sum taxes are actually the one जिनको हम समझा जाता है as the most efficient taxes in terms of economic distortion, because they are not dependent on the economic behavior. Lump sum they have to be charged, right? And hence they create no substitution effect. आप इनको transport का problem छूट जाएगा. There is no substitution effect and hence there is no distortion. Correct option is option number B. Okay. Moving forward to question number 10. Wagner law of increasing state activities suggests what? वैगनर का लॉ क्या कहता है कि हमारे पास दो लॉ है, वैगनर्स लॉ एंड पिकॉक-वाइसमैन हाइपोथेसिस, व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स. वैगनर का लॉ कहता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्टिविटीज हमेशा ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है ना स्ट्रेट लाइन फैशन, इन अ कांस्टेंट फैशन. वेयरएज पिकॉक-वाइसमैन हाइपोथेसिस का मानना था कि ऐसा नहीं होता है. Economy can never function in the same way. There will be always jerks and steps and turns in the economy, as in terms of when we are spending on the public infrastructure by the state activities.
सो कब इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया कि पब्लिक जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे ही आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर भी अकॉर्डिंग टू पिकअप वाइसमैन हाइपोथेसिस दिस मे नेवर ऑलवेज बी ट्रू. So with this, we have come almost to 50% of the questions of your public exams. I hope the session is being turning helpful for you up till now. Okay, moving forward to the next question. Question number 11. The transfer payments are what? So transfer payments क्या होती है कि it's a one-way transaction जिनके लिए you are actually not done via like you don't do something for the other. So payments made without any quid pro quo. Quid pro quo होता ही यही है you do something and we do something. But transfer payments are single way payments in transactions. Right options option number B. Moving forward to question number 12. The principle of maximum social advantage. Maximum social advantage principle is always associated with DART. And this is DART, that's very famous, very important principle that states that your expenditure, the allocation of your expenditure should be in such a way that your marginal benefits equals marginal cost. Okay, so that the burden is actually minimized or reduced. Okay, so correct option is option number D, DART. Okay, a balanced budget multiplier. What do we mean by a balanced budget multiplier? बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि वन विच ऑलवेज सी ठीक है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर सॉरी आई एम सो सॉरी विच इज ऑलवेज वन माय बैड आई एम सो सॉरी which is always 1. Now, why do we call a balanced budget multiplier always equal to 1? Because यहाँ पे government spending, if your government spending is exactly equal to your taxation, your budget turns out to be 1. And that is what is actually required in the economy. So it is always equal to. So correct option is option number A. Okay. Forward. Automatic stabilizers क्या होते हैं? Automatic stabilizers are ones. Okay. Firstly, I'll explain what are automatic stabilizers. Automatic stabilizers totally which immediately themselves take place in the economy without any external force applying on it. Let's say आपका income अगर 1 लाख तक है आप कोई टैक्स नहीं पे करो. अगर आपका income 10 लाख तक तो आप let's say 5% टैक्स. So tax is in a sense of an automatic stabilizer. According to the economic situation, it keeps on reacting by its own self. So automatic stabilizer in fiscal policy क्या-क्या actually include करता है? आपका taxation हो गया, आपके unemployment benefits हो गए, so on. Correct option is option number B. Okay. 15th question talks about that the concept of fiscal drag refers to what? Now, fiscal drag is a situation जहाँ पे आपकी जो inflation होती है, it actually pushes your taxpayers into higher tax brackets. Fiscally, you have been dragged into tax brackets. Okay, so what will it lead to? It will actually lead to increase in the effective tax rate due to inflation, right? Because you have been forced to move to the higher bracket. Correct option is option number B. Moving forward to question number 16. Question number 16 talks about the debt to GDP ratio. कितना डेट है वर्सेस आपका कितना जीडीपी है इट विल शो व्हाट डज इट ट्राई टू शो इट ऑलवेज शो और ट्राई टू शो कि गवर्नमेंट का कितना एबिलिटी है आपकी डेट को सर्विस करने का. लेट्स से आपका डेट टू जीडीपी रेशियो इज 1, आपका जीडीपी इज 100. इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के पास सिर्फ 10 रुपीज की कैपेबिलिटी है कि वो अपनी इकोनॉमी को रन भी करे, अपने फ्यूचर डेट्स को भी पे करे. सो जितना कम आपका डेट टू जीडीपी रेशियो होता है उतना ही ज्यादा योर इकोनॉमी इज मोर प्रोमिनेंट एंड मोर स्टेबल. Correct option is option number A. Okay. So moving forward to question number 17. Question number 17 actually talks about according to the Ricardian equivalence theorem. So what did the Ricardian equivalence theorem talk about? Ricardian equivalence theorem ने suggest किया था कि आपके कंज्यूमर जो होते हैं वो एंटिसिपेट कर देते हैं आपका फ्यूचर टैक्सेस which have to be paid. आपके करंट डेट के लिए आपको फ्यूचर में क्या पे करना पड़ेगा, so that when you actually save more जब गवर्नमेंट बोरो करेगी so your debt and your tax financing is actually equal. So this is the in just idea of what the Ricardian equivalence actually talks about. So basically it talks about tax financing and tax debt have identity. Right? This is what I also explained just now, but when I was explaining what do we mean by Ricardian equivalence. Correct option is option number. Moving to the third last question in the case of public economics. The Finance Commission is in India. The Finance Commission जो होता है is always constituted for a term of 5 years. Okay? Which for the 5 years which is constituted for the center and states respectively.
Question number 18, option number C. Okay. So vertical fiscal imbalance क्या होता है? Vertical fiscal imbalance का मतलब क्या होता है? Vertically, at different levels पे which is the imbalance which is being created, right? Correct option is option number B. Imbalance at different levels. Same level पे हो, अगर इस level पे हो, this is your body. So within levels हो, this is your water. Okay. I hope this makes sense to you. The last question is, this is option B. Arrow's impossibility theorem mark relates to what? Market efficiency, social choice, public goods provision. वो सो आपका जो एरो का पॉसिबिलिटी थ्योरम है, बेसिकली ये किसके ऊपर बेस्ड था कि आपकी कोई भी वोटिंग सिस्टम जो है वो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं कर सकती सारे के सारे प्रॉपर्टीज। हाईलाइट करती है क्या? दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड बार्गेनिंग स्किल्स। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, social choices and voting paradoxes. So correct option is option number B. And with this, we have actually wrapped up your most important, relevant, I would say relevant, but the most important PYQs of your public economics section, which will actually help you recall all the other peripheral and related concepts. Okay, so this was all about your public economics. Okay, so now we will move forward with the next unit that we have to actually deal with, which is your environmental economics and demography, unit 9 of your UGC NET syllabus. And let's just quickly look at the relevant, most important PYQs. Okay, so this is the syllabus. The tragedy of commons occurs because of law. Tragedy of commons basically क्या problem होती है आपकी? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि you basically end up leads to collective irrationality. कि आप collectively ही irrationally behave करने लग जाते हो, and which is causing a problem of commons in the society, right? So the correct option is option number B, that individuals' rational behavior leads to collective irrationality. Everybody is doing their best. Let's see, there is a carrier field, right? There is a field जहाँ पे 3 people come to gaze their cattle. This is an open space. So this is your, let's say, grasses. So these cattle are actually grazing the grasses. Now they went back and they set their fence. That's that the grasses in this field is actually very good, and the cattle have also eaten it very nice. So what happens the next day? More people come. Next day, more people come. So what is do? They are doing best for themselves, but as a whole, a community as a whole, their decision is leading to irrationality because you are destroying the place completely. You are not letting the space to reach. Ek time pe kya ho jayega? It will get barren. So this is the problem of tragedy of commons. Correct option is option B. Okay. Moving forward, question number 2 talks about the Coase theorem suggests that what? Coase theorem आपका basically it is related to your bargaining rights and anything. सो बेसिकली ये क्या सजेस्ट करता था कि अगर आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट 0 है और आपके पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो आपका जो बेसिकली बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के भी यू कैन कम टू अ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग थ्रू नेगोशिएशन, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, राइट? व्हाई प्राइवेट पार्टीज कैन सॉल्व एक्सटर्नैलिटी प्रॉब्लम्स थ्रू नेगोशिएशन. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. Which of the following is example of a positive externality? ठीक है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज तो बेसिकली क्या होती है? एक्सटर्नैलिटीज आपकी वो एक्टिविटी होती है इकोनॉमी में, एक्टिविटी होती है सोसाइटी में, फॉर विच यू आर नीदर पेड नॉर रिवॉर्डेड, जिसके लिए ना आपको अप्रिसिएशन किया जाता है ना पनिश किया. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या हो गई? जैसे कि आपकी एजुकेशन ट्रेड, राइट? सो दिस इज करेक्ट. मूविंग फॉरवर्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्फसाइजेस. सो सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट का जो वर्ड का मतलब है, इट केम इन योर ब्रंटलैंड रिपोर्ट. Brundtland Commission का रिपोर्ट जो आया था, फर्स्ट टाइम that time it has been defined correctly. So sustainable development आपका क्या होता है? कि meeting the present needs without actually compromising the future generations needs and demands. This option is legal. Okay. So this is the correct option. Moving forward, the contingent valuation method talks about. The contingent valuation method talks about basically आपका जो contingent valuation method होता है, this is a method to evaluate your environmental goods. So contingent valuation method it is basically used to evaluate what is your maximum willingness to pay. आपकी एक कंज्यूमर की डिफरेंट सेट ऑफ कंज्यूमर्स की एक एनवायरमेंटल गुड के लिए को पे करने के लिए व्हाट इज देयर मैक्सिमम विलिंगनेस, दैट इज योर कंटिंजेंट वैल्यूएशन. सो ऑप्शन नंबर बी. Moving forward to question number 6. Question number 6 talks about आपका
carbon trading scheme work on the principle of what? So carbon trading scheme, basically, it is to control pollution. Pollution को control करने के लिए ही, wherein certain restrictions are put on you in terms of how you actually emit carbon in the society. So it is based on market-based pollution control. So let's say somebody is polluting more, somebody is polluting less. So he will buy his carbon credits and in turn give him some sort of reimbursement or renunciation. So this is the basic principle of carbon trading schemes. The correct option is option number. Question number 7. Question number 7 talks about environmental Kuznets curve suggests what? Environmental Kuznets curve suggests that initially your basically your pollution increases and then it actually decreases. So the environmental Kuznets curve is also a U-shaped curve. So it initially increases, inverted U-shaped curve, and then decreases. So the correct option is, in this case, option number C. Pollution initially increases and then decreases with. Okay. Moving forward, the concept of ecosystem services include what? Ecosystem services का basically क्या होता है? What are the services which are provided by what should be provided to the ecosystem? So it actually provides services of regulation, culture, support, provisioning. So all the activities are pertaining to it. So this is your correct. Okay. Moving forward to question number, correct option is option number B. You can read what are the ecosystem services and how are they categorized. Now moving forward to question number 9. Question number 9 talks about your hotlink tree suggest what? So आपका hotlink rule basically जो है, it suggests that what is the optimal extraction path of a renewable resources. एक exhaustible या non-renewable resources को what is the optimum level of extraction that is to be done. So the correct option is option number B. Price of an exhaustible resource that should grow at rate of interest. Okay? So if you want to know more about the hotlink rules, I have discussed in the marathon session, which is also available on the UGC NET channel of EduShort, and you can just go and have a look at the explanation. Okay. Question number 10. Question number 10 talks about maximum sustainable yield in fisheries, which is related to what? Maximum sustainable yield आपका long term average catchment को depict करता है. ठीक है? So what is the maximum and also sustainable? Sustainable मतलब कि future वालों के पास भी available होना चाहिए. So what is the correct option? Largest catch that can be taken without compromising future catches. So this is the correct option. Okay. Moving forward, the social cost of carbon represents what? Social cost basically क्या है carbon? एक ton of carbon dioxide से कितना economic damage हुआ? That is the social cost of carbon. 8 ton of CO2 से कितना equivalent amount of economic damage हुआ? That is carbon. Social cost representation. Correct option is option number B. Question number 12. Question number 12 talks about the principle of common but differentiated responsibility. I'm so sorry. Okay, forgotten to attach the question. Okay, I have attached answering you to the question. Apologies for that. So आपका principle जो है common but differentiated responsibilities जो है, इसका मतलब क्या है? So basically there is you can say a rivalry or a tussle or a fight between the developed countries and the developing countries. देखो, अब क्या बात हो रही है? Now the talks have been that we want to preserve the climate. ठीक है? But इसमें दो contradicting views है. एक है आपकी developed countries की, एक है आपकी developed countries. Developed countries कहती हैं कि it is the responsibility of everyone collectively to preserve the environment. ठीक है? Developing countries क्या कहती है कि we are at this particular junction because you have already polluted environment this much. We are still in a growing stage and we still have our reserves to use. Like हमारे पास अभी भी हमारा carbon dioxide emission capacity बचा. So it is your responsibility. Though it is all of us common responsibility, but the onus lies majorly on you, right? And hence you should take the greater responsibilities. The correct option is option number A. Developed countries should take greater responsibilities. Okay. So moving forward to question number 13. Malthus का theory जो है population क्या suggest करता है? Malthus का theory of population suggest करती है, हमें पता है कि आपका population जो है वो exponentially grow करता है और आपका fruit जो है जो arithmetically grow करता है. Population exponentially grow करता है and exponentially grow करता है और आपका fruit जो है वो arithmetic terms में grow करती है. पॉपुलेशन टेंड्स टू ग्रो फास्टर नहीं.
supply. This is the correct option. Moving forward, the demographic transition model क्या show करती है? हमें पता है demographic model के 3 या 4 stages होते हैं. From high births and high deaths, we actually move to low births and death rates. So this is your birth rate and death rate. So your birth rate starts falling. This ये धीरे धीरे fall करते हैं. But there comes a time जब आपका ऐसा भी situation आता है. This is usually आपका stage 1. This is usually आपका stage 2 जहाँ पे आपका population explosion भी होता है. And कम आ जाते चाहे डेथ रेट ज्यादा हो जाते बर्थ रेट कम हो जाता. दिस इज योर स्टेज 3. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A. Moving forward to question number 15. The dependency ratio means what? Dependency ratio क्या है कि कितनी population dependent है working age. Dependent population upon working age. अब this is two types में young dependency ratio, old dependency ratio. If in totality they are asking you, then it means you say 8 का population plus 60 plus का population divided by 15 to 54 या 16 to 64, whatever is the working age population of country, respective countries का या demography का. This is your total dependency. अगर सिर्फ young का पूछ रहे हैं तो आप इसको इसके साथ करेंगे, इसका पूछ रहे हैं तो इसको इसके साथ करेंगे. So correct option is option number 1. So basically the concept of demographic dividend again, okay, this is a similar concept, but a different question, but a similar concept. So the question talks about that your concept of demographic dividend refers to what? Refers to basically economic benefits which are actually favorable for the age structure. The correct option is option number B. Okay. Moving forward to next question. The next question talks about that population momentum means what? So population. Okay, now with hash the answer. Okay. Population momentum का क्या मतलब है? Population momentum का मतलब क्या मतलब है कि आपकी population जो है it will continue to grow even if आपका fertility आपकी replacement level से नीचे आ जाए. Replacement level is 2.1. What do you mean by replacement level? Ideal replacement level होता है 2.1 which can actually replace the current population. कितनी population हमें चाहिए जो आपकी current की population को replace कर पाए? That is your replacement level. Okay. So population momentum क्या है कि even if आपका replacement level गिर जाएगा, even then आपको fertility will somehow obviously continue to grow. This is your question number 17. Question number 18 actually talks about कि gravity model of migration suggest क्या करता है कि gravity model क्या suggest करता है कि आपकी जो migration है it is negatively related to your distance. Obviously अगर distance ज्यादा होगा तो आप you will think twice or thrice or 10 times, but positively related to your economic opportunity. Obviously, जिस एरिया में opportunity ज्यादा होंगी, will migrate to that area. So option is option number B. Question 18. Question 19. Brain drain refers to what? Brain drain का क्या मतलब होता है कि movement of, if let's say very high skilled people of one country transmigrates to another country in search of better opportunities, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी country में से जो बहुत ही solid sharp brains and they are actually migrating and your economy's brain is actually declining. So immigration of highly skilled workers, that is your brain drain. Question number 20. The process of urbanization typically refers to basically urbanization का क्या या रूरल से अर्बन में कन्वर्जन हो रहा है. जितना ज्यादा ये होता जाएगा उतना ही ज्यादा अर्बनाइजेशन ट्रेंड बढ़ता जाएगा. This is your question number 20. Okay, we have one last question attached here. कि life expectancy at birth means what? Life expectancy at birth means average number of years a newborn is expected to live. That is your average life expectancy at. Okay, so with this, we are actually wrapped up with your marathon PYQ series of both your public economics and environmental economics. And I believe we have been successfully able to cater to this within probably, let's say, half an hour. And I think this is the best way of revision to revise your concept. Then you come and solve a PYQ series in less than an hour or so for different subjects. And this is also will help you to active recall session, which is ultimately important. So with this, I wrap up the final link of the session of the marathon series by UGC NET by EduSure. And I would highly request you guys, if you have liked the video, to please like the video and also subscribe to the EduSure's UGC channel of YouTube for more frequent updates and more interesting and informative videos. Till then, I take leave. All the very best for your upcoming UGC NET exam on this upcoming Friday.
Okay, hi everyone, and a warm welcome to today's session. So, this session is going to be very, very important from your exam point of view because this is going to be our final interaction before your June 2025 attempt, right? So, as you know, the agenda for today's video is to take you through a marathon session where we will discuss the most important topics, most important questions from my portion, the portion which I have covered with you guys. That is unit number 3, that is statistics and econometrics, and unit number 5, which is the international economics portion, right? So, this is the agenda for today's video. Now, let's jump into this. So for statistics and econometrics, I have given you questions subtopic wise. So the first subtopic that we need to know is what is the probability theory, concepts of probability, distribution, moments, central limit theorem. So this is the first topic. And we have covered each of these topics in details in our paid batch also in YouTube, you'll get the lecture videos. So I hope everyone knows the concept. The agenda for today is to solve some questions, to look at the most important questions. So let's see the first one, which is March 2023 paper number 1. This question asks that which of the following are correct in case of probability of two independent events A and B. So this question is testing your knowledge of statistical independence, right? So independence can be mutual. It can be, for multiple events also it can happen. Mutual independence and pairwise independence. These are the two things that we have covered. Now, if you look at the option C, probability A given B is equals to probability A. So which is absolutely right if A and B are independent. So what is the formula for this? A given B is probability A intersection B upon probability B, right? Now, if A and B are independent events, what can you say about A intersection B? It will be simply probability A into probability B. And this probability B is here, so this will cancel out. So it will be only probability A, right? So this first option is absolutely right, and due to the same logic, the second option is incorrect. See, probability A given B is not equals to probability B because we just proved that it is probability A. So option B is incorrect. This is by definition true that probability A intersection B will be probability A into probability, right? So this is absolutely right. Fourth option, we know by the independence properties, we have done this thing in class. If A and B are independent events, then A complement intersection B complement will also follow independence. So this will hold, right? So we have proved this also in our class. A intersection B complement. This will be probability A into probability B complement. This is the second property or result or corollary, whatever you want to call it, or A complement intersection B. For this also, independence will hold. Right? All these things are true if A and B are statistically independent. Right? So this is the thing that we have done in class. So this concept is very important. Not only independence, mutually exclusiveness and exhaustiveness, right? These two things also very important. Any question can come, conceptual question or problem solving question. They can give you some values also for probabilities. They will ask you to find out a particular thing, right? So depending on the concept of independence, mutually exclusiveness and exhaustiveness, question can be formed, or they can simply give you this kind of questions, right? Conceptual question. So see option number D, probability A intersection B complement, we have just seen. This will be true. Probability A into B complement, this is true. And the last one, A intersection B complement, it should be probability A and probability B complement. This complement is not there, so this option is wrong. So what are the right answers? A is right, C is right, and D is right. So A, C, D only. B will be the right answer, right? So I hope this concept is clear. Independence, I'm again repeating. Independence, mutually exclusiveness, exhaustiveness, and all the probability formulas that we have done in class has to be remembered very well because any question can come in any format, be it conceptual, be it numerical solving type of question, anything can come from this, right? So please prepare this well. Here I have attached a solution also. If you want, you can take a screenshot. Same thing that I have discussed. Now let's move to the second question. Okay.
So let's see the second question. It's a binomial distribution question. It says the binomial distribution can be used under which of the following conditions? So again, the conceptual questions from different distribution. What is the, situation in which different probability distribution is being used? What are the special features, mean, variance, moments, skewness, kurtosis? So these are the few things that you have to know for binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution, uniform distribution. So basically the well-known distributions only, these things are important. Now, in case of binomial, what will be the things? First option says the number of trial is finite and independent. This is obviously a requirement. This is true. Number of trials cannot be infinite. Number of trials has to be finite. N that we define. N in case of binomial distribution, it has to be a finite number. So this option is gone. Independent is fine. Independent has to be there, but infinite trials cannot be there. Third is each trial results in two mutually exclusive and exhaustive outcomes. Absolutely, namely success and failure. So on the basis of this, we define P and Q: probability of success of each trial, probability of failure in each trial. So this option is right. The probability of success is a constant for each trial. This P is constant for each of the trials. This is right. Probability of failure does not remain constant. This is false, because probability of failure is simply 1 minus probability of success. So if this remains constant, this should also remain constant. So this option is gone. Right answers will be A, C, and D only. So D will be the right answer for this question, right? So these kind of conceptual questions, very important. Again, see, I have attached a detailed solution. If you want, please take a screenshot or pause the video and give it a read. See, in which of the situation we can apply binomial distribution. I have given that, and then I have given you statement wise analysis why this option, which option is right, which option is incorrect. I have given you that, right? So when n is finite, trials are independent, each trial has only two outcomes, probability of success and failure remains constant, then only you can apply binomial distribution, otherwise you cannot, right? D is the right answer to this question. Now let us quickly move to the next question. This question is from the next subtopic that we have covered. It's the descriptive statistics, where we have studied central tendency, dispersion, correlation, index number. So questions will be from that in the next segment. See, this is question from December 2012. The question from correlation, it says if the correlation coefficient between x and y is 0.3, then you have to match list 1 and list 2. So in list 1, see, the first item says -1 to +1. So if you take a look at list number 2, what will be that? It will be the limits of the correlation coefficient, right? So A is option number 2, right? And you can subsequently delete the rest of the options, which you for sure know not the answer. You can simply delete them. So this will help you to find out the correct option faster. Option 2, correlation coefficient between x and y, this is given to you as 0.3. So simply it will be 0.3. So B will be option number 1. So by method of elimination, we know that B is the right answer, but just for your clarity, let us see. The square of the correlation coefficient is simply the coefficient of determination. So C will be option number 4. And coefficient of correlation between x and -y. So if Rxy is equals to 0.3, what will be Rx and -y? It will be simply -0.3. So a negative sign will come due to this minus. So it will be simply -0.3. So D will be option number 3. Option D is the right answer for this question. So from the correlation topic, firstly, understand what is Pearson's correlation coefficient. This is the main important thing. And then go into the different properties, right? In class, if you remember, we have discussed different properties of this correlation coefficient, simple correlation coefficient. Please understand each of the feature, right? Why it is symmetric, why it is independent of scale and origin or not. So these kind of things, they can ask you. Origin and the scale change, what will be the impact of that? That they can ask. This kind of matching question might come. And also another thing is the range of values. So we know that correlation coefficient can range from -1 to +1. This we know. Now in different range, suppose in -1 to 0, what is the interpretation? If the correlation coefficient takes values from -1 to 0, what is the interpretation for that?
From 0 to 1, what is the interpretation for that? For specific values, if it is -1, what is the interpretation? If it is exactly 0, what is the interpretation? If it is exactly +1, what is the interpretation? This also I have given you a detailed lecture note. Here I am not discussing the detailed, solution, because this we have already done. The agenda for today is to take you through the important concepts. That is what I am doing right now. So please prepare this well, that in which range, what is the interpretation of this correlation coefficient. So from there, conceptual questions might come, or they can simply ask you to compute this also. This question is not that, common. They haven't asked you about this in recent years, but they might give you, they can give you the two regression lines. From that also, they can ask you to find out the correlation coefficient. You will simply find out the regression coefficient bxy. So this formula we know, r square will be simply bxy and by. So product of these two regression coefficients. And then if you take the square root, you will get the value of r. So either this kind of question, or they can give you this range interpretation question, or simple matching question like this based on the properties of the correlation coefficient. And this, all these things we have discussed in our class. YouTube also will get the lecture video. So that is about that. See, I have attached the interpretation. Please take a look at this. Take a screenshot, whatever you feel comfortable with, please do that. Now let's go to the next question. This is from the index number, chapter index number, which also comes under descriptive statistics, June 2020. Which of the following price index number satisfies the factor reversal test? So this is the most common question from the index number chapter. So I've told you the best way to remember is remembering this table, that you have factor reversal test and you have time reversal test, right? These two are the basic test that we use to find out if an index number is good or not. And we have studied four different kind of, there are different kind of index numbers, but four index number is most important: Laspier's index, Pasch's index, Marshall-Edgeworth index number, and the Fisher's index number. These are the four primary index number that we need to know. The best way to remember is that Laspier's index and Pasch's index do not satisfy this factor reversal or time reversal test. Marshall-Edgeworth index only satisfies the time reversal test, but not the factor reversal test. The only index which satisfies both this test is the Fisher's index. Right? This, I hope, is clear by this time. I have discussed this multiple times. Only the Fisher's index number satisfies both factor reversal and the time reversal test. That is why it is also known as the ideal index number, right? Fisher is the ideal index number. Marshall-Edgeworth satisfies the time reversal test only, but not factor reversal. And these two are completely not a good measure because they do not satisfy factor reversal as well as the time reversal. So see, which one of the following numbers satisfies factor reversal? So factor reversal test is not satisfied by these three. Only the Fisher's index satisfies factor reversal. So that will be the right answer. See, Fisher's index. Let me show you the solution. Okay, so please take a screenshot of this. In exams also, if you find this difficult, you can quickly write this somewhere. That will help you to understand. So please take a screenshot or do whatever you want, but please keep this in mind. And here I have given you that the factor reversal test. What is the essence? The main statement is that the price index and the quantity index, the product will be simply equals to the value index, right? So price index into the quantity index will be equals to the value index. This is the factor reversal test. And what is time reversal test? It simply says if you interchange the base, suppose you calculate this, interchange, 0 is the base year, 1 is the current year. If you just interchange them, you calculate two separate index and you take the product, that will be simply equals to 1 because they will be reciprocal of each other, right? If you need to satisfy time reversal test, this condition needs to hold. The index number, if you interchange the base, then it will be simply the reciprocal of each other, and this is the factor reversal test, right? So these are the two, quality checking test for index numbers that needs to be satisfied. Only the Fisher's index satisfies. So from index number, this is the only kind of question which is important. They can at max give you what is chain based index like that, or they can give you a table. They can ask you to calculate some particular index, what is Laspier's index, what is Pasch's index. So please take a look at the formula for each of the index numbers and which test is satisfied by
what kind of index number, or at max the chain based index number, right? So this is all that we need to know, most important. Now, see, these are only suggestions. In actual exam, what will come, I cannot predict, because in every exam, they can give you some surprise questions, right? This is on the basis of what we have seen previously. I'm just giving you a suggestion, and bird's eye view of what you can expect in your exam, right? Next question. It is from central tendency. It says the correct relationship among arithmetic mean, geometric mean, and harmonic mean. So we have, understood two different relationships. First is that arithmetic mean is always greater equals to geometric mean is always greater equals to harmonic mean. This is the first relationship, and the second is that arithmetic mean into harmonic mean will be equals to the geometric mean whole square. These are the only two relationships that we have studied that we need to remember. And you can easily prove this. Take two real numbers, positive real numbers. See here, I have done this for you. A and B. Find out what is arithmetic mean, what is geometric mean, what is harmonic mean, and calculate this thing. You will see the left hand side and the right hand side will be exactly the same. I have done this. You can take a screenshot. See, this is arithmetic mean, this is harmonic mean, this is the product. So this A plus B will be gone. 2 and 2 will also be cancelled out. This is simply AB, which is simply the geometric mean square. Geometric mean is root over of AB, and so if you take the square, it will be AB. So this will match. Now, GM equals to AM plus HM, there is no relationship like that. AM is always, always, always greater equals to HM, so this is incorrect. AM, this relationship is also not there, so the only right relationship will be C. So from central tendency, what is important? The relationship, yes. AM, GM, HM, any question can come. Also, when do you use which kind of mean? I mean that they will give you a context. In which particular scenario you use arithmetic mean, in which particular scenario you use geometric mean, harmonic mean, median, mode, quantize, quartiles, percentiles. So all the measures of central tendency that we have studied, we need to know in which particular situation we apply what. That I have discussed in class. If you consult the revision note also, you will see that I have mentioned that. Please keep this handy, and please understand this thing. And also another thing, they can ask you to compute. They can ask you to compute these things also. They can ask you to compare these measures also. Firstly, they can give you some values. They will ask you to compute some measure. Say calculate the median, calculate the mode, calculate arithmetic mean, GM, HM. This kind of things may come. Questions from their relationships may come, or they can give you the matching questions. In which scenario you use which measure, like that, right? And what are the which measure satisfies all the qualities of the good measure of central tendency. So I've given you certain measures which help you to understand whether your central tendency measures are good or not. So which measures satisfy which of the points, which measure do not satisfy which of the points. This has to be known. Now the next question is from the dispersion. This is the relative measure of dispersion. See, January 2017 question. Given the following data, you have number of observation n is given to you, arithmetic mean and the variance is given to you. You have to calculate the coefficient of variation. Now this is a question from dispersion. So in dispersion chapter, what is important? We have done the absolute measures of dispersion and the relative measures of dispersion. Everything is important. For each of the measures, you have the notes with you, the lecture videos are there. So for each of the measure, you have to know the formula, how you calculate it, and what is the merit and demerit of each of the methods. Question might come from that, or they can simply ask you to calculate some relative measures. This is why relative measure is important, because we want to make it unit free, like that. Now this question is pretty simple. Here we do not actually need the number of observations, because if you remember, the formula for CV is SD upon mean into 100. This is the formula. Here I have written that. Now see, SD is what? SD is just the square root of variance. Variance is mentioned here. So simply take square root of that. Arithmetic mean is given to you. This is 180 and this will be simply 100. This is 18 upon 180 into 100. So if you compute this thing, this will come out to be 10%. See, 0.1 into 100, this will be 10%. So B will be the right answer. So this kind of minor, small calculation they can give you that you can do without any calculator, right? So this kind of questions might come.
from dispersion. Also, another thing is that what will be the impact of origin change and the scale change. This is also another question. Important thing they can give you for the central tendency measures also, dispersion measures also. So please understand what will be the impact of origin change and scale change for each of the measures that we have discussed. Right now, the next subtopic that we have to go to is the sampling distribution and sampling methods. I have given you this question from December 2023 paper. Just take a look at this. Here they have given you different kind of sampling distributions. You have T distribution, F distribution, standard, normal, chi-square. These are the four, standard sampling distribution that we always discuss about. So you have to match in what is the right, formation. What is the right formational thing from list one. See here, first option, sum of squares of n independent standard normal variables. So this is very simple. This will be chi-square. Right, this we have done in our class. So suppose I from 1 to n zi squared, this is there, where zi's are individually following IID normal 0, 1. So individually they are independently and identically distributed standard normal variables. Now if you take the square of them and take the sum, this will follow chi-square distribution, chi-square. This is chi-square distribution with n degrees of freedom. If you have n here, it will be n. If it is only 1, here it will be 1. So how many sums you are taking, depending on that, the degrees of freedom will be determined for the chi-square distribution. So A will be option number 4 for sure. Now let's see the next, ratio of standard normal variate to the square root of independent chi-square distribution with respect to the degrees of freedom. This is the standard T distribution with n degrees of freedom, right? So this will be option number 1. B is option 1. So this is just the formation, this statistic. How do you define the statistic? Chi-square is defined as this, T is defined as this we know. Then you have ratio of two independent chi-square variables. So chi-square 1 upon the degrees of freedom, chi-square 2 upon the degrees of freedom. Suppose n1 into degrees of freedom. So this will form F distribution with n1 into degrees of freedom, right? So this will be option number 2. And then you have normal variate minus the mean divided by the standard, x minus mu by sigma. This is the standard normal distribution, which is Z distribution. So this will be option number 3. So these four things, this is the chi-square, this is for T, this is for F distribution, and this is for the standard normal distribution. This form has to be known to you. This is a recent question. See, this is from December 2023 paper. This question has come from sampling distribution. So they can give you this question. Here you get the right matching. B will be the right answer for this question, right? You can take a look at this. Next question is from sampling. From sampling June 2025 question I have listed to you. See, different random sampling methods, not random, all of them are not random. So some sampling methods and their description you have to just match. So simple random sampling, equal probability of each item in all the trials. Then you have systematic sampling. So what will be systematic? Random selection, yes. So random selection of the first and then systematic. So suppose you randomly choose the first item and then you decide that you will choose every fifth item. Suppose you choose this item every fifth item, next item, fifth item, fifth item. So first selection is random. This point you have chosen randomly, then this point you will be taking the fifth item from here. Then again you will take the fifth item from here. Again you will take the fifth item from here. So there will be a system, there will be a pattern that will be defined by the researcher or econometrician or the who is designing the experiment basically. So he will define a pattern. In general, the kth item will be selected. There will be a particular system which has to be defined. That is why it is known as the systematic sampling. So B will be option 3. Quota sampling is a non-probability sampling. Right? Probability is not used. Quota means you have a fixed number of seats. Suppose in a college you have only 10 seats and you are just choosing 10 people who are coming, say first come first serve basis. If you are doing that, you are using the non-probability sampling, quota sampling. You will use the technique as long as your quota is not filled. If it is filled, then you will stop the process. So that is obviously non-probability sampling. And stratified random sampling is a random choice of all items from each of the stratum. Right? So for each of these sampling, we have discussed
the probability sampling, non-probability sampling in details. So they can, what kind of questions can come? They can ask you about, they will give you some random sampling, some sampling technique. They will ask you which of the following is not a probability sampling or which of the following is a probability sampling. Find out the incorrect option, find out the correct option, or they can give you this. They will give you a short description. They will ask you to match, right? So these kind of questions can come from sampling, and a short description for each of the sampling is important, which you will get in my notes if you haven't done it already. It's a very important topic. So from sampling, either question will be from sampling distribution, or it will be from the basics of sampling, or it can be from the different standard errors. Okay, so firstly, I have given you some hypothesis testing question, and then we have to go into the standard errors also. That is important. So this is the subtopic that we will cover, that is the statistical inference and hypothesis testing. So let me come down. So see, this is from June 2014. So from hypothesis testing, type 1 and type 2 error for sure. It's very important. Many questions they have given you in subsequent years. Very important, list 1, list 2. See, rejecting H naught, if it is true, it's a alpha error, which is the type 1 error. You can, see it from here also. Let me show it once. So rejecting H naught, if it is true, this is the typical type 1 error. Type 1 error is also given by the level of significance denoted by alpha. It is known as alpha error. Then you have accepting H naught, if it is false, it is the type 2 error, which is also known as the beta error. Type 1 error is the alpha error, type 2 error is the beta error. Now, probability of rejecting H naught when it is false. So we should reject H naught when it is false, which is true. Basically, that will determine the power of the test. Power of the test is nothing but 1 minus the type 2 error, right? This is the power of the test determined by 1 minus the type 2 error or 1 minus the beta error. And the final thing is measuring sampling variability due to random fold. That will be standard error, right? So this refers to the standard error, and here you can see the right matching. So what will be the right option? This will be A is option number 3. A is 3. Then B will be 1. Then C will be 4. And D will be option number 2. So D will be the right matching. So you have to know what is type 1 error, type 2 error, power of the test, standard error. Different standard errors, I have given you a question on that. I'll solve it. I think the next question will be on the basis of that. Let me show you. Yes. This is the June 2024 recent year question, which is very important. See, this is matching list 1 and list 2. Here they have given you all the test statistic, and here they have given you the standard error. So for each of the test statistic, you have to be very clear of about what will be the required standard error. So let me show you the solution that will help you to understand this thing. So first is the statistic is the sample standard deviation. Sample standard deviation, the required standard error will take this format. So I'm not writing this. Please take a screenshot if you're not aware of this thing. The sample standard deviation, it will be root over of sigma square upon 2n or sigma upon root 2n, any which ways you can call it. Then you have sample variance. Sample variance, it will be sigma square root over of 2 upon n. Difference of two different sample means. Then the standard error will take this particular format. Sigma 1 square upon n1 plus sigma 2 square upon n2. And finally, you have difference of two independent standard deviations that will be in this particular format. So this, I know many students find it very difficult. It's a little confusing, I know, but this forms have to be remembered because this is a recent year question and they can repeat this question again, right? So we have discussed three kind of questions. Firstly, different methods of sampling, that has to be known. Second is the sampling distributions, different distributions, 4 different kind of distributions and their structure, that has to be known. Third thing that we have discussed is the standard error. This, for every test statistic, what will be the standard error? That is for sure very important. Fourth thing that we have discussed is the errors, type 1 error, type 2 error, part of the test. That is all from this particular portion which I wanted to share with you. These are the high points, basically most focused area. So this is there. Now next topic is econometrics, which is a linear regression model and blue. Now from that, what kind of questions might come? So this is a kind of question from regression which we haven't discussed in class. So I thought I should discuss it here. List 1, list 2. So they have given you different kinds of regression. See, coincident regression, parallel regression, concurrent regression, dissimilar regression, depending on the slope
and the intercept. Depending on the slope and the intercept, we can, distinguish between distinguish among these four kind of regression. So to understand things better, I have given you a very short explanation of each. Again, if you want, please take a screenshot. It's not usually something we cover in class, but they are giving you this question. This kind of surprise questions will be there, right? In UGC NET, nobody can answer 100% of the question. Some, question will be there which will be a little unpredictable, which you have not done previously. It's our duty to take a look at as much as we can, right? So let's see this. First is the coincident regression. Coincident regression means the same slope, same intercept and slope. Coincident means they are completely uh, a same line. Basically, two regression lines, when two regression line is the same line itself. So the slope is also the same and the intercept term is also the same. That is the coincident. Basically, two, you cannot distinguish between the two. They are completely merged with each other. They are only one single line. If that is the case, that is the coincident regression. See, same intercept and the same slope. So same thing, a same single line is basically coincident. The exact opposite of that is the dissimilar regression, where both the intercept and the slopes are different. Suppose one is this and one is this, right? So this will be called dissimilar. The intercept is starting point. The intercept is also not the same and the slope is also not the same. If this is the case, this is the exact opposite of coincident regression, called the dissimilar regression. Then you have parallel regression. As you can understand from the name itself, parallel means the slope has to be the same. Slope is same, the intercept is not same. So basically, it's like this. The slope is the same, but the intercept point, starting point, the intercept is not the same. And concurrent is same intercept but the different slope. So one is going here, one is going there, but the starting point, the intercept point is the same. That will be known as the concurrent regression, right? So these four kind of regression, if you want, please pause the video, take a screenshot, do something, write it somewhere. Let's please remember this thing. These are the four different kind of regression that you can distinguish among, depending on the intercept and the slope terms, right? So if you know this thing, then the matching becomes easy. Exact same matching, I have given you the answer. D will be the right answer. A is option 3. C, coincident, both intercept slope coefficients are same. D is 1, parallel regression means only the slopes are the same. C will be option 4, concurrent means intercept are the same, slopes are different. And D is option 2, dissimilar means both intercept and slopes are different. So it's a recent question, June 2024, and D will be the right answer for this question, right? So now let's move to the next one, June 2023, Houseman specification. Now, from the econometric section, for every topic that we discuss, the tests are very important. If heteroscedasticity is present, how you can detect it? Multicollinearity, how can you detect it? Autocorrelation, how can you detect it? Endogeneity, how can you detect it? For time series also, for stationarity, what are the tests? How do you detect it? So all the tests are very important. I have given you a specific example, but it may not come, but other tests might come, right? So this question is from June 2023. Houseman specification is a test for checking endogeneity, basically, right? So what is the use case? See here, exogenous variable is correlated with the error term, which is not true. Endogenous variable is correlated with the error term. That is why we use the Houseman specification test. It has a use case in case of panel data also. Panel data is not in our syllabus, but those who will be doing empirical research later on, you will need this Houseman test to determine if it is a fixed effect model or a random effect model, which model you should go with. So that will be determined by the Houseman specification test. So this will be the right answer. See here the solution I have attached. Houseman test is used to determine whether an estimator like OLS random effects are consistent or not. Specifically, it tests whether the regressors are endogenous. So that is the second option. If an explanatory variable is correlated with the error term, so basically the CLRM assumption is violated. The exogeneity assumption is violated. That is why OLS will be inconsistent. Biased and inconsistent answer will be there. The estimates will be biased and inconsistent because the assumption is not met. So that is why we need to specifically check if the endogenous variable is correlated with the error term or not. Houseman test compares OLS and the instrumental variable method for
detecting basically fixed effect, random effect method, which model you should use in which case. For that also we use this Hausman test, right? So the core idea is to test the endogeneity, that is whether an endogenous variable is correlated with the error term. That is why B will be the right answer for this question. This is June 2023 paper. Again, I have given you another question from the testing portion. See, this is June 2023, detecting serial correlation. Serial correlation is nothing but the autocorrelation. We use the runs test. For heteroscedasticity, Goldfield quant, detection of multicollinearity condition index, specification error, Ramsey-Reset model, right? So this will be the right answer for each of the tests. Again, I'm saying, please remember the use case, right? Any question can come from this kind of thing. Now, the next question is the consequences. If autocorrelation is present, if heteroscedasticity is present, if multicollinearity is present, what will be the consequence? Under heteroscedasticity, we know estimates will be consistent, unbiased, and inefficient. Autocorrelation also same, consistent, unbiased, inefficient. Under multicollinearity, consistent, unbiased, and efficient. So this we have discussed numerous times. I'm not repeating this again. See, if the disturbance term is heteroscedastic, which one of the responses will give the right answer? Estimators will be biased. This is not right because estimators will be unbiased under heteroscedasticity. OLS estimates do not have the minimum variance property, which is true because inefficiency is there. This is true. Test of significance will be inaccurate. That is true. OLS estimates will be inconsistent, which is false because consistency still holds. So the only right answer will be option B and C. So C will be the right answer for this question. If you want, you can take a screenshot for this portion. That will help you to solve questions. Here I have given you the explanation. See, option-wise explanation why this is true, why this is false. Same thing which I have told you. So I'm not going into this, reading this. If you want, you can pause the video and see. The next question, which of the following, this is June 2014, which of the following assumptions are required to show consistency, unbiasedness, and efficiency of the OLS estimates? Now see, this I have given you before also, that for the zero mean assumption that we say as the first assumption, it is needed for proving the unbiasedness. Homoscedasticity, which is this, error variance is a constant term. This assumption is needed for proving efficiency. And no autocorrelation assumption is required for both efficiency and consistency. This is very important. Which assumption is required for what purpose? Zero mean for unbiasedness, homoscedasticity for efficiency, non-autocorrelation for both efficiency and consistency. Only the fourth assumption which this option gives you, that is the normality assumption, which is not a necessary assumption. This we only require for testing hypothesis, not required for consistency, unbiasedness, efficiency. Only for hypothesis testing we use this normality assumption, right? So if you now go back to the options and see, so for unbiasedness, efficiency, and what else? Unbiasedness, efficiency, and consistency. We need all three of them, but this fourth assumption is not required. So 1, 2, and 3 only. C will be the right answer for this. So again, OLS is the classical linear regression model assumptions. Again, very, 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 very important thing. Many questions can come. Violations we can also ask you, if this assumption violates, then what happens? How do you detect it? This question. Very simple. These are the only kind of questions that comes from this topic. Now, the final segment that we have in unit number 3 is the identification problem, simultaneous equation, recursive, non-recursive, discrete choice models, time series. So I've given you some questions from that. See, this is the question which I was talking about in the previous video. I haven't attached any solution for this because I wanted to solve it with you. So let us quickly do that. See, consider the following system of equation with standard notation. This is a simple, simultaneous equation system. We have 3 endogenous variable y1, y2, y3, and 3 exogenous variable x1, x2, and x3. Then what you have to do, according to order condition, the first equation is. So order condition, we have done this before also, but specifically I have given you this thing to show you the rank condition. So I'll be solving both order and the rank condition for this. So I'll do that for the first equation. The homework will be for the second and the third equation. Please check it for yourself for your clarity, right? So let us quickly do that. So what we do for order condition, 3 variables needs to be known, K, M, and G.
K is the total number of variable in the entire system. So in this entire three system of equation, what are the total number of variables? Is I have told you y1, y2, y3, and here you have x1, x2, and x3. So total six variables, endogenous and exogenous variables are present in your model. So that will be there. That will be the value of K. Now for M is the total included exogenous and endogenous variable in the equation of our concern. Basically, the first equation, see this. These are the four variables which are included. So in some cases, I have seen in some books they have included this variable also. So I don't think that is right. If you include this, the result will change. So that I don't know why they have done that. But for our cases, as per my knowledge, that should not happen. We should take the only the included variable. Included means what is there in the right hand side. So ideally, that should be the case. So I take that. But in some books, I have seen that the results may vary because they have included this variable also. So keeping aside that possibility, I am doing this. See, here you have two included endogenous variable and two included exogenous variables. So 4 is the value. And G is the total number of equations or total number of endogenous variable, which is 3. Y1, Y2, Y3, 3. So for order condition, we know we calculate these two things, K minus M and G minus 1. K minus M is 6 minus 4, 2. G minus 1 is also 2. So this equation has to be exactly identified or just identified by the order condition. This is the necessary condition. Order condition is the necessary condition. What we know is that if K minus N is exactly equals to G minus 1, it is just identified. If it is greater, it will be over identified. And if it is less, it will be under identified. So this is the order condition that we have learned. Since they are equal, it will be just identified. Now the second thing is that I want to show you the rank condition. What is the necessary condition is the order condition which we have done. Rank condition is the sufficient condition. Whether it is sufficient or not, that we need to verify. For that, it is a three-step process. So for a question I have seen in June 2024, they have given you this rank condition also. So it's good for us to know the process at least. So step one. In step one, what you do, take everything on the left-hand side. So let me show you how to do this. Let me write the equation from here. So y1 minus a0 minus a1 y2 a1 y2 minus a3 y3 minus a4 x1 minus a5 x2 equals to u1. Right? So only u1, u2, u3 write it on the right hand side or whatever, but the rest of the things has to be here. Y2, second equation, beta naught, beta 1 by 3, beta 2, y1, beta 3, x2 equals to u2. And the third equation will be y3 minus gamma naught. So this should be alpha naught, I guess. This is alpha naught, alpha beta gamma. Gamma naught minus gamma 1 x1 minus gamma 2 x2 minus gamma 3 x3 equals to u3. So this is the step number 1 that take everything on the left hand side. Now the second thing that we have to do is to make a table like this: y1, y2, y3, x1, x2, x3. So in step number 2, what you do, you have to make a table where you will write all the coefficients. So basically the coefficient matrix from these equations. So see, from the first equation, the coefficient of y1 is 1. So put 1 here. What is coefficient of y2? It is minus a1. So put minus a1. For y3, it is minus a3. For x1, it is minus a4. For x2, it is minus a5. For x3, it is 0. x3 is not present. Now, similarly, for rest of the equations, for the second equation, y1 is minus beta 2, y2 is 1, y3 is minus beta 1, y4, x1 is not there, x2, if it is not there, put 0, x2 is minus beta 3, and x3 is also not present. Third equation, y1
Y1 is not present. No. Y2. Y2 is also not present. Y3 is present. Y3 is 1. X1. X1 is minus gamma 1. X2 is minus gamma 2. X3 is minus gamma 3. Right? So these are the first two steps. Firstly, write everything on the left hand side, collect the coefficient and write in a matrix format, in a tabular format in the second equation. Now the third step and the final step that you have to do. So for example, we are checking it for the first equation. See where you have zero, So only variable where you have zero is this. Only variable where you have zero is this. So you have to write that only. 0, 0, 0, 0, gamma minus gamma. Right. So here in this example, I have only one column that I will get. Now the rule is that, so what you have to do in whichever place you have zero. Suppose, for example, this is also zero in some example. So we'll write both y3 and x3. Right. So whatever variable which are excluded from that equation, but it is included in the model, you have to write that. Remember, whatever variable they are excluded from that particular equation, that is equation number 1 in our case, but it is included in our model. X3 and Y3, sorry, Y3 to hai in our model. So X3 is not present in the particular equation, in the equation number 1, but it is present in the model. You have to write that. So now, what is the next thing you have to check? What is the next thing that you have to check? You have to check whether you can check if you can get a non-zero determinant of order g minus 1. So g is in our case 3. So 3 minus 1 is 2 of order 2 from the extracted columns. So here we have only one single column. So from one single column, can you find out any 2 cross 2 matrix? The answer is no. So see, if this condition is satisfied, if you can do that, then you will say rank condition is satisfied. If no, then rank condition is not satisfied. So that is the simple thing that you have to do. So first two steps, I hope this much is clear. Write everything on the left and then write the coefficient matrix. Now what you are doing, individually, equation wise check. So in the first equation, you have only 0 here. So we have taken only this particular column. Now from this column, you have to check if you can get a non-zero determinant. Suppose this is a 2 cross 2 matrix or 3 cross 3 matrix, whatever. In that case, we can have some possibilities that we find out some 2 cross 2 matrix which is non-zero. Then if that is the case, then we will say yes, rank condition is satisfied. But here we see that this is basically 3 cross 1, right? 3 rows are there, 1 column is there. We cannot even form 2 cross 2 any matrix. So automatically this condition does not hold. So rank condition does not hold for the first equation. So even if we have said that yes, this equation is just identified in the necessary condition, that is the order condition, but rank condition is not satisfied. So it is not a sufficient condition is not holding. That is why this identification cannot be done. This equation cannot be estimated. So for example, let me give you another example. For example, I take the second equation and try to do that. Just for example, I don't know whether second, okay, let me find for the second equation also. K remains the same. M will be what? 1, 2, 3. And G is what? G is 3. So K minus M is 3. G minus 1 is 2. So this is over-identified. Second equation is over-identified. Now the first two steps remains the same. Now how do you check the rank condition? So this is over-identified, rank order condition is satisfied. Now see the rank condition. So here we see two variables are excluded. Can you see? X1 and X2 two variables are excluded. So write them minus A4 0 minus gamma 1, and here you have X3 in the first one is 0. Yes. So this is 0, 0 and minus gamma 3. So you have to write this. Now you have to check whether you can find some 2 cross 2 matrix.
some 2 cross 2 matrix from here which is not equal to 0. For example, let me take the first determinant only, 0, 0. This will be 0. This is not true. So 0, 0 minus gamma 1 minus gamma 3, that is also 0. Take the first and the third, minus A4, 0 minus gamma 1 minus gamma 3. This is A4 gamma 3 minus 0. So yes, so this becomes non-zero. So see, you have found out 1 2 cross 2 matrix, which is what we wanted. At least 1 2 cross 2 matrix you can find out for your equation number 2, which is non-zero, which means rank condition is also holding. Rank condition is also order condition, yes, over identified, satisfied, estimable. The equation is estimable. More than one unique values can be found out. More than one unique solutions can be obtained. And by the rank condition also we see this is sufficient, right? So both order condition and rank condition satisfies for equation number 2. And I wanted to show you this thing only. For the third equation, please try this on your own. Please let me know what you get in the comment section, right? So if you want, you can take a screenshot. And now let us move to the next question. So they can give you order condition, rank condition. Next is December 2012 paper. It says, in the context of simultaneous equations and econometric models, consider the following statements. First statement, identification is a problem to be dealt with before estimation. Yes, identification comes prior to estimation, which is one of the basics of simultaneous equation model. Order condition is necessary but not a sufficient. This is also true, we have seen. Order condition is a necessary condition, rank is the sufficient condition. Third option, two-stage least square method of estimation gives consistent estimator if the equation is under identified. Is this true? The answer is no, this is not true. We can use this two-stage least square only in two cases, either in just identified case or in case of over identified. For under identified, the equation is not estimable. If you have under I, that is k minus m, if you find this is strictly less than g minus 1, if this is the case, then you cannot do the estimation. You have to collect more information and make the process either just identified or over identified before going to estimation. So rank condition for holding, you need either just identified equation or over identified equation. If you see that one equation is under identified, then there is no question of finding rank condition. So they can also give you the trick that firstly you see that. So if they give you any simultaneous equation, find out the order condition. If you see it is under identified, then you don't need to check for any rank condition. If it is just identified or over identified, then only you can find out the rank condition. This is a simple thing. So this option is incorrect. Fourth option, under indirect least square method. Least square method is applied to the reduced form equation. So this is also, so this is what we do in case of indirect least square. So right answer will be 1, 2 and 4 only. 3 is incorrect. So option D will be the right answer. Let me show you the solution. Please take a look at the solution. If you want, please take a screenshot. Okay, so let's see the solution here. Identification must be addressed before estimation. So if a model is not identified, estimation is meaningless. So that is why we go into the order condition, the rank condition before going into estimation, because that gives us the clarity that whether we should go for estimation at all or not. If the equation is just identified or it is over identified, then only we can go into estimation. Otherwise, we cannot, right? If it is under identified, we cannot even go into the rank condition and hence into estimation. So this is the first statement is right. Then the order condition is necessary but not sufficient because we need rank condition. Two-stage least square provides consistent estimators only if the equation is identified, which is just identified or over identified. If the equation is under identified, no consistent estimator exists. And this is also true that in case of indirect least square, this method involves estimating reduced form equations which are identified using OLS and then retrieving the structural parameters. So all this 1, 2, 4, all these things are right. Only option 3 is incorrect. Let's move on to the few final questions from this unit. December 2013. Which of the following are true concerning triangular or recursive system? In case of recursive system, the feedback loop is missing. One directional causality exists. The
The parameters can be validly estimated using separate application to OLS to each of the equation, right? In case of each of the equation, the explanatory variables for each of the equation is not correlated with the error term. That is why we can apply OLS to each of the single equation. But independent variables may be correlated with the error terms in the other equations. So all these statements are right. This is absolutely true. That is why the cross correlation exists. Basically, the explanatory variable of one equation gets correlated with the error term of the other equation, not for the equation in which it is present into, right? So that is the basic feature of recursive system. Third, an application of two-stage OLS would lead to unbiased but inefficient parameters. That is also true. Fourth, and the independent variables may be correlated with the error term in the equations in which they appear. This we just discussed. This is not true. So only correlation may exist if it is the other equation and not in the equation the explanatory variables are present as an independent variable, right? So option 4 is incorrect, but 1, 2, 3, all the options are right. So this is the only single thing that we need to know from the recursive system. It's a small concept. I have covered this in class, but this kind of concepts may come. Here I have given you detailed explanation. What is triangular system or recursive system? You can take a screenshot if you are not comfortable with this topic. Detailed explanation is given for each of these things. I'm not explaining this more. Please take a screenshot. And let us go to the next question. March 2023 paper 2, logit model. Discrete choice model, you have logit model, probit model. So in logit model, the question comes from this logit itself. The logit function is this. From the odds ratio, they will vary the value of p, and from that they will give you the question. So in logit model, the odds ratio decreases from 1 to 0, then the logit will be what? So the odds ratio is p upon 1 minus p. If this ratio goes from 1 to 0, so see here I have done this. If it is 1, log 1, it will be 1. So log 1 is 0. If it is less than 1, it is decreasing towards 0. This is less than 0, so logit will become negative. So you can simply put these values here. Put these values here. Firstly put 1 and then put 0. You will see this logit as a function will go towards negative, right? So it will be negative. If the odds ratio decreases from 1 to 0, logit will become negative. A will be the right answer for this question. So in probit and logit, only conceptual question, here and there small concepts might come. Whatever we have in the notes, it's more than enough for us. And the final question that I wanted to share with you is from the time series is regarding the stationarity. Which of the following tests has stationarity in the null hypothesis? So every test that we have covered except one is about testing the unit root, presence of unit root. So in every test in the null hypothesis, you see unit root is present. If unit root is present, null hypothesis will be non-stationary. It's checking whether non-stationarity is there or not. But there is only one test which does not do that. It tests that stationarity is present or not. So it has stationarity in the null hypothesis only for the KPSS test. So ADF, Phillips Perron, ERS, all these tests checks for the unit root, presence of unit root, but KPSS checks for the stationarity in your hypothesis, which is also unique and a most important question. Basically, I have given you this explanation here. Again, please take a screenshot. Augmented Dickey-Fuller null hypothesis test unit root, which means rejecting H0 will imply stationarity. Same for Phillips Perron, similar to ADF, null hypothesis test unit root. ERS test also test unit root. Only the KPSS test, this test null hypothesis to be stationary. If you reject null hypothesis, then you will have non-stationary. If you reject null, you conclude the series is non-stationary, right? So this is answer is the KPSS test. So this is all about the unit number 3. I have tried to cover all the major aspects of this particular unit. If you have any questions, any doubts in any of the question, please let me know in the comment section. And also the rank question which I have given you for the third equation, please try to see what will be the order condition and should we go into the rank condition or not. If we need to go, then check that whether rank condition is sufficient, this holding or not, right? So that is a homework I just gave you to help you out, right, with this concept. Now, unit number 5. In unit number 5, along with the lectures that we have done, we have covered multiple, questions, past year questions I have solved along with that.
So very few questions I wanted to touch upon, and explanations are also given. I'm not going into the details, but I will just give you the important points which you have to remember. So first question, December 2014, it says Maastricht Treaty led to the creation of which of the following? European Parliament, European Court of Justice, European Union. It will be European Union. As you can see, it was a treaty signed in 1993, officially established European Union, laid the foundation of euro and deeper integration. This is a concept of regional economic integration, regional economic blocks, economic integration topic. This is a question from that. So in that topic, we have discussed different degrees of integration, starting from the free trade area all the way to this union concept, European Economic Union. So please understand each of them in details, right? So that is an important question that they can come, that they can give you. Then you have the trade models. Trade model is usual questions. What is the basis for trade in each of the cases? In Heckscher ruling theory, most important cause of the difference in relative commodity price trade between the nation is the difference in factor endowments. This we have discussed multiple times. So the basis for trade in Heckscher ruling is the factor endowments. Depending on the abundance and the intensiveness of the factors of production, the trade is carried out, right? So let's see a little bit of explanation I have added here. Heckscher ruling model explains trade based on differences in countries' factor endowments like labor, capital. Land is usually, it's a 2 cross 2 cross 2 model. Land is usually not there, but labor and capital solves as a factor of production. The next question is from December 2011, Leontief paradox. Again, important thing, empirical, contradiction to Heckscher ruling. Assertion reasoning question. It says assertion Leontief paradox contradicted Heckscher ruling. Absolutely right. US exported labor intensive commodities. So the exports were 30% more labor intensive, though we assume that USA is a capital intensive country. So that was the main contradiction. So both the assertion and reasoning is right, and reasoning is the correct explanation of it. So this kind of questions, theoretical questions, can come from Leontief paradox. Here I have attached a small, explanation if you want. Take a look. The next question is from December 2011 paper. It says tick mark the option having the right chronological order. So you have to remember the years now. Singer, Haberler's opportunity cost, Leontief paradox, Heckscher. Every theorem, every paradox, everything that we have discussed, you have to remember the year, because sequential question, this chronological order sort of question, they give you very frequent. This is very frequent question, probable question. So see, Heckscher ruling was built in the year 1920, Leontief paradox 53, Haberler 1930s, and Singer is 1950s. So if you arrange them, you have to remember this years. If you arrange them, you will get this particular sequence. 4, 3, 4, 3, 2, 1. A will be the right answer. So the matching is easy if you remember the year. If exact year, if you don't remember, then please remember in which decade, 1920s, 1930s, 1940s. So in 1920s, whatever things have established, please remember them. 40s, remember 50s, 60s, 70s. So decade wise also, if you remember, you can answer the sequential question. Next is the Rybczynski theorem. This we have taken class on. Growth. The growth of only one factor at a constant relative price leads to absolute expansion of the output of the commodity using the growing factor more intensively. So we know, if suppose the quantity of labor increases, physical quantity of labor increases, and X is the labor intensive good, then the production of X will increase, but the production of the other good will fall. Similarly, for capital, if capital increases and Y is the capital intensive good, this will increase, but this will fall. This is the basic statement of Rybczynski, so it will be option number B. The commodity which uses the growing factor more intensively, that will grow, and the other factor will lose in the production process. So this is about Rybczynski theorem, has to be known. Stolper-Samuelson, December 2014. It says if you impose a tariff, the scarce factor will gain from production and the other factors will not. So Stolper-Samuelson theorem postulates imposing a tariff. Tariff imposing nation causes real income of the nation. See, the scarce factor will rise. Theorem suggests that protection or tariff benefits here
benefit the scarce factor of the economy and will hurt the abundant factor, like unlike the usual trade exchange, right? So in usual trade, what happens? The abundant factor gains and the scarce factor loses. But Stolper Samuelson suggested that if tariff is imposed, then the opposite happens. The scarce factor gains and the uh, other factor, the abundant factor, loses in the production process. So that is the concept of Stolper Samuelson again, important topic. Next question, which of the following statement is true in the gravity model? Gravity model, it is a bilateral trade context. It determines how much bilateral trade will take place. True. It was developed by Jan Tinbergen in 1962. True. It takes into account distance between the trading nations. So this is also true. It tells you that if the distance is less, then the bilateral trade will be more. And depending on the size and the distance. If size is more, then trade will happen. And if the distance is less, then the amount of bilateral trade will. So all these three things were being suggested by Jan Tinbergen in its gravity model. So all of the above will be the right answer for this question. Next question, October 2022 question from product cycle model. We have discussed the 5 different stages from any stage. You have to remember for each of the stage what is happening. So for any stage might come. See here in this particular question, in which stage imitating country starts producing the product for domestic consumption, it will be nothing but stage 3, right? So for any of the stage, they can give you a statement and they can ask you in which stage the thing is happening. So please remember this. So I've given you a small explanation if you want. Take a look at that. Next question. March 2023, immersive rising growth. So I've just taken out the main important things that we need to know. It was suggested by Jagdish Bhagwati. He said that export biased growth by the poor nations would worsen their terms of trade so much that they would be worse off if they had not grown at all. So if they have not participated in trade, that will be a better situation in this case because their terms of trade will gradually worsen if they focus on export biased growth, right? In case of particularly poor nations. So rapid export expansion can lower the prices and reduce the welfare. So that was what is suggested by the Jagdish Bhagwati. This is basically a paradox in case of balance of payment or international trade theory. That is option number 8. Next question, effect of devaluation. See, December 2011, assertion reasoning. Devaluation can correct imbalance in balance of payment. Yes, we have seen this as a tool that government uses. This is true. Reasoning, devaluation raises the price of imported goods, reduces the foreign price of exports. Yes, so devaluation makes export cheaper and import costlier. That is why this balance of payment improvement takes place. So both the statements are right and are the correct explanation. So this is about this question. Next question. December 2014, match list 1 and list 2. First is the Marshall-Lerner. See, sum of price elasticity of demand of export input greater than unity. If this is told, then Marshall-Lerner condition is satisfied. Marshall-Lerner, please remember the 3 conditions. Balance of payment is the difference between nations' income and expenditure. This was postulated in the absorption approach. Sidney-Alexander absorption approach. Empirical evidence showing lower short-run price elasticities. That will be what? And this is J-curve effect, right? Evidence showing lower short-run price elasticities of export in. And fourth is method to cut down imports is quota. Yes, method to cut down import will be quota. So let me show you the explanation. Yes, that was J-curve effect. See here, I have given you the explanation for this. Every concept we have done this in class have to be known in short. Next question, July 2016, a country can have an increased trade surplus due to. Trade surplus means your export, value of export is more than the value of import. That can happen. See, declining imports and rising. So trade surplus will be export minus import basically. So if your import falls and your export rises, definitely trade will be in surplus. So this is a direct relation. Higher tariffs, no, higher tariffs will not help. By the trading partners, higher tariffs will impact the export-import process, that will hinder the surplus. Domestic inflation and capital inflow, these are not the right answers. Why this is so? See,
It is this makes export costlier, affects the current account balance. So all the other options are not right. Only direct increase in surplus will happen if we have the first thing, that is import falls and the export prices. That will make our trade surplus. Declining imports and rising exports will be the right answer for this question. July 2016. Which statements about current account? So this question is regarding what will be the components of current account and capital account. I have told you in current account only the transfers or transactions will be there which does not affect the asset liability position of an economy. If it affects, then it will be a component of the capital account. So they can give you some components, they will tell you which are in the current account, which are in the capital account. So the first option says shows the net income from the foreign trade. Second is relates to financial claims and liabilities. So financial claims liabilities will change the asset liability position. So this will not be in the current account. This will be the current account. So see, current account includes the trade balance, net income, for example, dividends. But financial claims are capital account or financial account because they affect the asset liability position. So only what will be right? Only A will be the right answer, which is true about current account. Only A will be the right answer for this question. This type of question you can expect. Then absorption approach question. Absorption approach to BOP was given by Sydney Alexander. So see, linked BOP to the domestic output versus spending. This is what he has postulated. Absorption approach. Again, this is July 2018 paper. We have done this in details in class. Prepare this. All the deficits, different kind of deficits. June 2020. List 1, list 2, fiscal deficit, budget deficit, revenue deficit, primary deficit. So revenue deficit will be revenue expenditure receipts. Fiscal will be, so here it is correctly, I guess it is correctly matched. A is, I think there is some issue in the question. I have matched this correctly already. Revenue deficit is this, primary deficit is fiscal. So please ignore this options here. I have just matched the correct answers. Fiscal deficit is total expenditure minus receipts plus borrowing. Budget deficit, total expenditure more than total receipts. Revenue expenditure is this primary. So this is the correctly matched. So these options you can ignore. There is some mistake here. While copying the question, there is some mistake. So this is the right arrangement. So all this budget, what is this different kind of deficits? Deficits regarding BOP that you have to know the formula. This is June 2020 paper. Then you have March 2023 Mundell cleaning. In Mundell cleaning, you have to know when is the situation when fiscal policy most effective, when is the situation monetary policy most effective. So here the question they have asked you in 2023 is about the monetary policy. So we know perfect capital mobility, flexible exchange rate will make monetary policy most effective. And it is, if it is fixed, then it will be fiscal policy. So that is the main two results of Mundell cleaning that you have to take a look at. Then you have dumping. Question from dumping may come. Cost-based dumping occurs when the firm sells abroad below the average total cost. Average cost or average total cost, they are both the same. So dumping happens in two ways, either the price cutting or the cost cutting. So they will sell the price, one company selling the product abroad at a lower price than the average total cost, then which is lower than the cost of their production just to capture the entire market. That is the dumping scenario. So average total cost is the right answer. Now they can give you questions from the types of dumping, which I have given you next. There are three kinds of dumping that we have discussed in class: sporadic dumping, predatory dumping, persistent dumping. All these three things are important. December 2014 question. So see, sporadic is clearing inventory at the low price. That is why they are selling. Just to clear the inventory, they are selling at a low price. Predatory is eliminating competitors, then raise price. Basically, initially selling at a lower cost, capture the market, eliminate all the competitors, and then raise the price. That is the predatory dumping. And persistent means price discrimination due to demand elasticity differences that basically continues. Consistently, persistently, they do this. That will be, all of the above will be the right answer. So these are the three different types of dumping that we have discussed in class. Exact question came in December 2014. D will be the right answer. Final few questions. This question is from effective protection rate calculation. This is a very important question. Many years they have given you. So they will give you this TA and TI values.
final good tariff, input cost ratio, input tariff. These figures will be given to you. They will ask you to calculate the effective rate of protection. For that, what you need to know, this formula. This again, exactly from the notes, effective rate of protection, this is the formula. So all these values are given. T value is given, A is given, Ti is given. Simply you have to just put this and calculate. So this formula needs to be remembered very well. Question may again come from this effective rate of protection. Next question is from economic integration, ascending order of economic integration, June 2024. Custom union, free trade area, economic union, common market. So in my note, you will get description about each of this. See what will be the order from low to high. From low to high, lowest is preferential trade arrangements. And here I have listed all the the important things also. What distinguishes that particular union? See, preferential trade agreements is reduced tariff for the selected goods only. Free trade area, no internal tariffs, independent external tariffs. Common union free trade area will be there and plus common external tariffs. Common market integration will also happen. Custom union is there plus factor mobility. And the highest degree of integration is the economic integration, common market plus unified policies. The government policies will also get unified. So D will be you can match it here. This will be the right sequencing. This is June 2024 recent year question on economic integration. Now, the last few questions will be on international organizations, which is a memory-based question again. June 2011, arrange the chronological order. IMF, IC, WTO, GATT. See, years I have mentioned. IMF 1945, GATT 1947. IFC, it's a part of World Bank Group 1956. WTO 1995 in the Uruguay round replacing GATT. So the right chronological ordering will be C 1, 4, 2, 3. This will be the right answer. So for all these groups, all these treaties, organizations, you have to remember when it was established, why it was established, what is the main functioning of those institutions or treaties, what is the main thing. Also the headquarters. If you know this, that will be good. Then the GATT rounds, chronological ordering of the GATT rounds. So again, in my note, I have complete list of GATT rounds. If you see, below round was 1960-61, Kennedy 64-70, 67, Tokyo round 73 to 79, Uruguay round is this. On the basis of that, you have to arrange this chronologically. So here I don't have anything to explain. I already explained the things which I wanted to explain. These are all memory-based questions, so I'm just taking you through. January 2017, not an amber box subsidy. So again, WTO subsidy classifications, again, a list is there in my note. Amber box, what is green box, what is blue box, what is black box, all these subsidies need to be known. So amber box subsidy is the trade distorting subsidy. For example, the minimum support price. Subsidy on, okay, so you have to consider not an amber box subsidy, okay. Seed subsidy, which is the green box subsidy, is not a trade distortion. So seed subsidy will be the right answer here. Rest of the things are amber box subsidies, which distorts trade. So this subsidies, this green box, blue box, black box subsidies, you have to know and what it relates to. So for example, green box is related to non-trade distorting subsidy. Amber box is related to minimum support, the trade distorting subsidies. This has to be known. SARC members. Again, in my note, you have a small lecture, small note about SARC. All the member countries needs to be known. Here, see, can you identify which is not there? India, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, China. Only China is not present in SARC. Every other country is present. Total 8 members are there. India, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, and 4 others. China is not there. So D will be the right answer. Which of the countries are present? A, B, C, D. All these countries are present. China is not present. D is the right answer. Next question, March 2023, paper 1. Arrange the trading groups by the establishment year. EFTA, NAFTA, APEC, Andrian community. So these are all again this economic community, the unions basically. Depending on their region, these unions are being formed. It is there in my note. And the years in which they have appeared. So see, EFTA 1960, Asian 1967. I don't have anything to explain here. This is 1969. APEC is 1989. NAFTA is 1994.
So you have to formulate some way to remember as much as possible. A will be the right answer. Depending on that, you have to match the sequence which I have done here. Last few questions, I guess. June 2023, headquarters. Headquarter kind of. So I have just given this question just to give you an overview of what you have to know. What are the things that you need to know? That is why I've included every possible question that you may expect in your exam. GATT headquarter is Geneva, IMF is Washington DC. So you have to find out which of the following are correct. The only incorrect is this. See, World Bank is Washington DC, right? IDA, International Development Organization Association, that's headquartered is also Washington DC and not New York. That is why this option will be incorrect. ADB, Agricultural Development Bank, that is Philippines. That is also right. So A, B, C, E, all these are right. Only IDA, International Development Association, this headquarters is in Washington DC. So for all the organizations that we have discussed, we have to know the headquarters for that. D will be the right answer. This is December 2018 Global Competitiveness Report is released by World Economic Forum. This is a general knowledge based question. B is the right answer. I think this is the final question. This is June 2011 paper. Question from Bretton Woods. Bretton Woods, which institutions were being established using Bretton Woods Agreement, and also what is the cause of, demolition of Bretton Woods? Basically, why this Bretton Woods system fails. So that reasoning is also important. So see, June 2011, the Bretton Woods twins are what? We know IMF and World Bank. IMF was established for monetary stability, balance of payment stability. World Bank for reconstruction and development purposes are the twins which was established using Bretton Woods. So B is the right answer for this question. And with this, I guess we have covered everything, right? So I have in details discussed questions that are probable from Unit 3 and Unit number 5. If you have any questions, any doubts anywhere, please let me know in the comment section. And all the very best for your June 2025 attempt. This is our final interaction before that. And I hope each of you have prepared these things very well. You like our endeavor to provide these materials to you free, absolutely free of cost in YouTube. If you like this, do give a like and do subscribe to this channel. And I'll meet you in some other video. I wish each one of you all the very best. Have a very great exam and take proper rest before the exam and go with 100% mental clarity. And I know every one of you will score very well in this attempt, right? So thank you so much, and let's meet you in some other video. एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आपको पता है आपका एक मैराथन आपका रिलीज हो चुका है, जिसमें कि बेसिकली हमने टॉपिक वाइज पूरा किया था। इस पार्टिकुलर मैराथन सेशन में हम जो प्रीवियस ईयर्स हैं, जैसे आपको पता है कि टॉपिक वाइज के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा रिपीट भी होता है और बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं उन क्वेश्चंस को लाइक यूजीसी नेट विल आस्क इन द एग्जाम। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है इस मैराथन का सेशन, आप जान रहे हो पहले से ही बहुत सारे टॉपिक कवर हो गए। तो इस पार्टिकुलर सेशन में बेसिकली हम इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मनी एंड बैंकिंग, ये तीन टॉपिक का जो कह सकते हो कि जो हाई चांसेस है जिन पीवाईक्यूज के आने के या फिर आप कह सकते हो उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम एक कह सकते हो कि एक इसका वे होगा करने का, और वो वे इस तरह से है कि जैसे मैं क्वेश्चंस अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसको आंसर करने के लिए मैं आपको अराउंड 10 सेकेंड आपको दूंगा, और अगर आप मतलब आपको एक अटेम्प्ट लेना है, उसके बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से करूंगा कि एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से आप अराउंड 10 क्वेश्चन कर पाओ, और वो आप देखोगे कि किस तरह से एक क्वेश्चन का ही एक्सप्लेनेशन आपके 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इस तरह से नहीं कि क्वेश्चंस पढ़ूंगा और सिर्फ उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताऊंगा, मैं थोड़ा डिटेल्ड वे में इसका कह सकते हो पहले से ही एनालिसिस कर दिया हूँ। जस्ट आपको 10 सेकेंड देने के बाद जो है आपका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा, तो वो आप अच्छे से सुनोगे तो आपका कह सकते हो कि उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जुलाई 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख रहे हो कि इट्स बेसिकली आस्किंग कि जो पार्टिकुलर बुक्स हैं इनका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ठीक है,
तो आप इसको एक बार अटेम्प्ट करो, ठीक है। ठीक है, तो आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का थोड़ा सा एक तो आइडिया लगा होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो आप देखो कि इस पर्टिकुलर, अगर कह सकते हो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो अगर आप चारों को देखो, द एफ्लुएंट सोसाइटी जो है वो जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ के द्वारा था और ये 1958 में था, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आपको जुलाई 2018 में है, तो उसको जाके आप, मतलब जस्ट इन केस, अभी तो खैर अब टाइम नहीं बचा है, अब नहीं करना है, बट आप एक तरह से देखो कि एक एक बुक का याद रखना है, ठीक है। आप ये नहीं कि सिर्फ एक चीज का, यहाँ तो खैर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है तो सबका पता ही होना चाहिए, अब बाकी आगे के क्वेश्चंस के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एफ्लुएंट सोसाइटी जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ 1958, एशियन ड्रामा गुनार मिल्डाल 1968, ठीक है। ये जनरल थ्योरी आप सभी को पता है केन्स के द्वारा 1936। फिर डेवलपमेंट एज फ्रीडम अमर्त्य सेन का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है, वो बेसिकली आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अमर्त्य सेन के द्वारा कौन सा दिया हुआ है, कैपेबिलिटी अप्रोच थियरी दिया गया है। और कैपेबिलिटी में अमर्त्य सेन ने किस चीज की बात की है कि यूटिलिटी इज नॉट द एवरीथिंग, मतलब यूटिलिटी ही सब कुछ डिसाइड नहीं करता है किसी एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल का, उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल का कितना फ्रीडम ऑफ चॉइसेस है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कैपेबिलिटी, आप कितना फ्रीली किसी काम को कर सकते हो, कितना कैपेबिलिटी है आपकी, दोनों सेम चीज है। तो आप सेन्स का कैपेबिलिटी अप्रोच को इस वे में देखो कि फ्रीडम की बात कर रहे थे, तो फ्रीडम से ही आपको पता हो जाना चाहिए कि ये बुक अमर्त्य सेन ने लिखा होगा 1999। और जब आप इसको अरेंज करोगे तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीन्स सबसे पहले केन्स, देन वी हैव जॉन केनेथ का बुक द एफ्लुएंट सोसाइटी, फिर आपका एशियन ड्रामा, एंड एट लास्ट इट इज अमर्त्य सेन का डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। देन आपका सेकंड में है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर अगेन आप 10 सेकंड इसको मैं दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा इस पे सोचो और फिर मैं इसका डिटेल्ड आप कह सकते हो एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, जैसे देखो अगर पहले से इस पे कुछ भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं समझना आपको कि ये जस्ट मैं आपका टाइम बचाने के लिए किया हूँ। ये मैं ये भी कर सकता था कि सामने में लिखता, बट आपका समय बचेगा और वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं पहले से ही पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ताकि जस्ट आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकूँ सीधा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक स्टोरी आपको भी पता है कि ये दो फेजेस में है, ठीक है। 1990 से 2010 तक एक अलग तरीके से एस्टिमेशन होता था और अलग डायमेंशन यूज होता था, और 2010 के बाद इसका अलग हो गया, मतलब इसका डिफरेंट मेजरमेंट का अप्रोच था और डिफरेंट इंडिकेटर्स, मतलब इंडिकेटर्स भी चेंज हुए। तो आपको पता है कि अभी के हिसाब से जो है वो ज्यादा बेटर होगा कि आप अभी के हिसाब से वाले को याद करो। तो ए और बी इसलिए होना चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये पहले भी था, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तीन इंडिकेटर एचडीआई का है। हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले भी वही यूज हो रहा था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। फिर आपका ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रियल जीडीपी पर कैपिटा, ये अब चेंज होकर के जीएनआई पर कैपिटा हो गया है, ठीक है। तो ये इसमें जीएनआई पर कैपिटा का बात नहीं है, तो आप कहोगे कि ये 1990 से 2010, मतलब 2010 से पहले का ही इसमें पार्टिकुलरली पूछा हुआ है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने ये नहीं देखा है कि 2010 के बाद जो हो गया है, तो ठीक है, आपको आंसर भी उसी अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। रियल जीडीपी पर कैपिटा था एज अ मेजरमेंट फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर आपका एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो और एडल्ट लिटरेसी रेशियो, ठीक है, रेशियो, ठीक है। और इसी को ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को कंबाइंड ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप देखो कि ए और बी मोर और लेस सेम है, ठीक है। और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बेसिकली एजुकेशनल अटेनमेंट के लिए था, और इसमें कह सकते हो कि वो तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी इनरोलमेंट को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर सही है। और एक और फैक्ट मैं इसके रिलेटेड बता दूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का 2010 से पहले अर्थमेटिक मीन लिया जाता था। जैसे तीन इंडिकेटर हैं आपके, एजुकेशन, हेल्थ और आपका कह रहे हो मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस तीनों का अरिथमेटिक मीन लिया जाता था। बट अब नए जो मेजरमेंट के रूल्स आ गए हैं उसमें आपको इसका ज्योमेट्रिक मीन लेना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। मतलब ए और बी करेक्ट है, बट आप देखोगे ऑप्शन में तो ऑप्शन ए में
ये दोनों इंक्लूडेड है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर ये क्वेश्चन आपका है, बेसिकली कह सकते हो कि आपका अप्रोचेस टू डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में, मतलब डेवलपमेंट थियरी का क्रोनोलॉजिकल इमरजेंस के लिए पूछ रहे हैं। तो फिर से आपको मैं 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। जून 2015 का क्वेश्चन, आप एक बार इसको अटेम्प्ट लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी मैंने एक, आप कह सकते हो कि थोड़ा सा जैसे डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए आपको मैंने, जब आप देखोगे हमारा जो 50 डेज का कोर्स यूट्यूब पे ही है, अपलोडेड है, उसमें जब आप एक थियोरी ऑफ डेवलपमेंट बेसिक्स का जो एक वीडियो करके है वहां पे, जैसे आपको पता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में किस तरह से आना होता है, मैंने आपको सिखाया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले एक बेसिक कह सकते हो कि फ्रेमवर्क है। बेसिक फ्रेमवर्क मतलब जैसे जो डेवलपमेंट का इंडिकेटर्स कह सकते हो या मेजरमेंट का वे लिया गया, ठीक है, उन सारे चीजों को, या फिर एक लोअर डेवलपिंग कंट्री में या अंडर डेवलप्ड कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं इन द पाथ ऑफ ग्रोइंग डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के होने के लिए क्या क्या जरूरी है और क्या क्या लैकिंग होता है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, इन्हीं को या तो सॉल्व करने के लिए या फिर इन्हीं को एड्रेस करने के लिए जो भी डेवलपमेंट थियरी आया है, आपका क्लासिकल हो गया, आपका जो भी आप पढ़ते हो, बिग पुश थियरी, आपका लुइस का थियरी, आपका फेयर एनिस का थियरी, जितना भी डेवलपमेंट का थियरी है, वो इन्हीं चीज को आइदर सॉल्व कर रहे हैं या फिर इनको एड्रेस करके इन इस पार्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि इट इट लीड्स टू अप्रोचेस टू डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब हम डेवलपमेंट थियरी को क्यों इन पार्टिकुलर इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया, इसके पीछे क्या रीजन था। मतलब आप ही सोचो, मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो तभी तो आप कोई थियरी लाते हो। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मॉडलिंग होने के लिए आपको पता है कि जैसे कोई भी ग्रोथ मॉडल सोलो अगर आया तो सोलो किसी पार्टिकुलर एजेंडा, या फिर आपको पता है कि सोलो ने देखा कि देयर इज अ प्रॉब्लम की लेबर और कैपिटल के होने से स्टेडी स्टेट का सिचुएशन क्रिएट होता है, बट स्टेडी स्टेट से अगर डेविएट होगा तो क्या होगा, सेविंग रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन के रिगार्ड में इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें कह सकते हो कि एक तरह से सॉल्व करने के लिए कोई भी थियरी आता है। ठीक है, तो यहाँ जो अप्रोचेस टू डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट थियरी में एमलगमेट हुआ था। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे इसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस था। तो सबसे पहले जीएनपी आया, फिर जीएनपी पर कैपिटा, फिर आपका वेलफेयर यूटिलिटी अप्रोच आया, फिर आपका बेसिक नीड्स अप्रोच आया, फिर आपका आया फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 1970, HDI 1990, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 1997, इसी को इनहेंस करके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI वो बोलते हैं, इसी को नीति आयोग इसी का यूज करती है। अभी जैसे सोशियो इकोनॉमिक जो सेंसस होने वाला है, आपको पता है कि डिलेड चल रहा है सेंसस, बट अभी रिपोर्ट आ गया है कि 2026 में, और मतलब इट विल स्टार्ट, 2 फेजेस में होगा। तो पहले तो सेंसस से हमें पॉवर्टी का डेटा मिल जाता था, बट अभी बहुत समय से सेंसस नहीं हुआ, तो नीति आयोग ने MPI का यूज किया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को यूज करके हमारे कंट्री का पॉवर्टी लाइन या कितने परसेंटेज पुअर हैं अभी, मतलब करंट कह सकते हो सिनेरियो में। ठीक है, MPI के बाद आप MDGs 2010 में मल्टी डायमेंशनल गोल्स, ये सारी चीजें आपको डेवलपमेंट थ्योरी की तरफ ले गई कि क्यों डेवलपमेंट जरूरत है और डेवलपमेंट का एक पर्टिकुलर थियरी होना जरूरत है। ठीक है, फिर उसके बाद SDG, आपको पता है इसका 2015 से 2030 तक का डेडलाइन है, और इसमें 17 गोल्स और 169 टारगेट्स दिए गए हैं। ठीक है, बट ये सारे किसी एक लोअर डेवलप्ड कंट्री में डेवलपमेंट के पाथ पे कैसे चलना है उस कंट्री को, उस चीज को इंश्योर करने के लिए या उस चीज को सॉल्व करने के लिए बना था। ठीक है, तो अगर आप इसी सीक्वेंस को देखो तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, सबसे पहले पर कैपिटा इनकम अप्रोच, फिर आपका बेसिक नीड अप्रोच, और सबसे लास्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, ये एक थ्योरी है, ये तो आपको पता ही होगा, बट हम चारों का बात करेंगे कि चारों का क्या थ्योरी का नाम था। ठीक है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी इज गिवन बाय, ट्राई करो आप।
ठीक है। तो आपको पता है लेवेंस्टाइन के द्वारा क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग क्या कहते थे कि एक किसी भी लोअर डेवलप्ड इकोनॉमी है वहां पे मतलब कह सकते हो कि एक मिनिमम एफर्ट इन द सेंस कि एटलीस्ट एग्रीकल्चर को ग्रो करने की बात कर रहे थे, कि मतलब बेयर मिनिमम क्या है कि सबसे पहले आप सेल्फ सफिशिएंट हो। सेल्फ सफिशिएंसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, एग्रीकल्चर को रॉबस्ट करना होगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर या फिर सेविंग्स को बढ़ाना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे नहीं जाना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में बहुत हाई अमाउंट ऑफ एफर्ट लगता है या फिर कह सकते हो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होगी। तो इसीलिए लेवेंस्टाइन और रोसेंस्टेन रॉडन में बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग वे है, दोनों ने डेवलपमेंट को अचीव करने का अपना अपना एक्सप्लेनेशन दिया। बट यही चीज कि रोसेंस्टेन रॉडन को क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, उनके अकॉर्डिंग था कि नहीं, हम सबसे पहले बिग पुश मतलब बड़े सेक्टर्स को टारगेट करते हैं, और ये एग्रीकल्चर वगैरह उसके साथ ठीक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब हम अगर हैवी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, हम अपना जो की सेक्टर्स हैं उसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा जो लोअर सेक्टर है वो सब भी सही हो जाएगा। फिर आपका अर्थर लुइस का अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, लुइस का थियरी में वही था कि जैसे आपको पता है कि एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं। तो लुइस का कहना था कि इसको ये लोग पार्टिकुलरली माइग्रेट करते हैं अर्बन एरिया में इन ऑर्डर टू हैव अ गुड इंडस्ट्रियल वेज, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर वेज से ज़्यादा वेजेस उनको मिलता है। तो ये जो माइग्रेशन होता है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की अर्थर लुइस ने। मार्क्स का स्टेजेस ऑफ ग्रोथ थियरी आपको पता है कि फ्यूडल लॉर्ड से होकर के दे वेर सेइंग कि ठीक है, कैपिटलिज्म आएगा, एंटरप्रेन्योर का रोल रहेगा, बट अल्टीमेटली दिस कैपिटलिज्म विल कोलैप्स एंड कन्वर्ट इनटू सोशलिस्ट, मतलब सोशलिस्ट सोसाइटी फिर से आ जाएगा। समझ रहे हो, फ्यूडलिज्म, कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म एंड देन एट लास्ट वी हैव सोशलिज्म। तो वही मार्क्स का ये स्टेजेस ऑफ ग्रोथ थ्योरी, और स्टेजेस ऑफ ग्रोथ थ्योरी और भी थे, पता है ना आपको, डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टोज का जो 5 स्टेज ऑफ ग्रोथ थ्योरी, वो भी स्टेजेस ऑफ ग्रोथ थ्योरी है। तो कई बार पूछ देता है कि कौन सा इसमें से स्टेजेस ऑफ ग्रोथ थ्योरी, तो मार्क्स का थ्योरी और रोस्टोज का थ्योरी, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, ठीक है। तो आप देख रहे हो, मतलब इससे आपका 4 डेवलपमेंट थियरी रिवाइज हुआ। मतलब इतना ही चाहिए, मतलब यूजीसी नेट आपको, हालांकि जरूरत है, मतलब आपको रोसेंस्टन रॉडन या लुइस का थियरी में वो ग्राफ भी आपको याद रहना चाहिए। बट आपको पता है ये मैराथन है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने सिंसियरली पढ़ा है, ठीक है, सिंसियरली पढ़ा है इन द सेंस कि आपने इस पर्टिकुलर चैनल पे देखा होगा 50 डेज का आपका पूरा कोर्स, आपको मतलब कोर्स मतलब कह सकते हो कि हालांकि वो भी कोर्स नहीं है, बट क्या कह सकते हो कि बहुत लोग इस तरह से होते हैं, या तो वर्किंग पीपल होते हैं या फिर मास्टर्स कर रहे होते हैं, उनके लिए एटलीस्ट इतना तो करके जाओ ताकि जेआरएफ क्लियर करने के क्लोज आ सको। अच्छा रैंक के लिए आपको प्रॉपर कोर्स की ही जरूरत होगी, आप ऐसे मतलब नहीं चाहते, मतलब ऐसे नहीं कि आप सोच रहे हो कि सिर्फ मैराथन देख लें। बट हम ये इसलिए करा रहे हैं कि ये एटलीस्ट उनको अच्छा मार्क्स तो ला दें, मतलब आप जेआरएफ के लिए होप कर सकते हो, ठीक है, रादर कि आप ऐसे ही ब्लैंक होकर के एग्जाम देने जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिसंबर 2011 का, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज, एक बार आपको ट्राई करना है इसको, ठीक है। ठीक है। तो गुरनार मिल्ड्राल आपका थियरी ऑफ कॉम्युलेटिव काउजेशन का थियरी था इनका। थियरी ऑफ कॉम्युलेटिव काउजेशन का मतलब होता है कि जैसे रीजनल इम्बैलेंस को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। रीजनल इम्बैलेंस मतलब एक एक तरह का इफेक्ट दिया था, एक था बैकवॉश इफेक्ट, एक था स्प्रेड इफेक्ट। स्प्रेड इफेक्ट का मतलब था कि जैसे अगर कोई डेवलप्ड कंट्री, जैसे अमेरिका में अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है, तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अगर अमेरिका में होगा तो उसका फायदा डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया को भी होता है। जैसे अभी आपको पता है कि चैट जीपीटी आया, ओपन एआई यूएस का कंपनी था, बट एआई का इन्फ्लुएंस लोअर डेवलपिंग कंट्री पे भी है, मतलब वो चैट जीपीटी हम भी यूज कर पा रहे हैं, तो ये एक स्प्रेड इफेक्ट होता है। और एक होता है बैकवर्स इफेक्ट। बैकवर्स इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो यूएस ही है, यूएस अगर बहुत ही ज्यादा ऐसा फैक्ट्री लगाए जिससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो उस पॉल्यूशन का इम्पैक्ट हमारे पे भी पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट जो एटमोसफेयर तो सेम है ना, हर कंट्री का एटमोसफेयर, अर्थ पे सभी लोग रह रहे हैं, तो अगर किसी पार्टिकुलर एरिया में अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, इसका इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड इफेक्ट। तो मिडाल का कहना था कि ये कॉम्युलेटिव कॉजेशन ला सकता है, तो इसको इस तरह से हम डेवलपमेंट को फॉलो करें कि ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड इफेक्ट, मतलब बैकवर्ड इफेक्ट एक्सीड ना कर जाए, ठीक है।
फिर आपका हिट्समैन का थ्योरी, हिट्समैन का अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी, ये नर्स का जो थ्योरी था, नर्स के बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी को कह सकते हैं काउंटर कर रहा था। इसमें लिंकेजेस की बात हो रही थी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस, मतलब एक इंडस्ट्री जो है, जैसे आप लेट से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करो, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक बैकवर्ड लिंकेज का काम करता है इन एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग। मान लो इंडिया को अगर एरोप्लेन बनाना है, ठीक है, तो आयरन एंड स्टील इसका एक बैकवर्ड लिंकेज का काम करेगा, मतलब इट विल बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। तो ये बैकवर्ड लिंकेजेस क्रिएट किया। और कह सकते हो मतलब इसी तरह से फॉरवर्ड लिंकेजेस कैसे होता है, फॉरवर्ड लिंकेजेस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ठीक है, एग्रीकल्चर का जो फूड प्रोडक्ट है, वो फूड प्रोडक्ट को मतलब वो तो रॉ मटेरियल होता है ना, एक पर्टिकुलर कह सकते हो किसी आप बिस्किट का ही कोई फैक्ट्री है, तो उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर लिंकेजेस का काम करेगा उसमें। और वही जो फूड प्रोडक्ट कह सकते हो प्रोड्यूस कर रहा है वो पर्टिकुलर फूड इंडस्ट्री, वो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे फूड इंडस्ट्री फिर हमारा बैकवर्ड लिंकेज। तो इसी तरह बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस होता है कि कह सकते हो कि कनेक्टिंग चेन, मतलब एग्रीकल्चर फूड इंडस्ट्री का बैकवर्ड लिंकेजेस है, और फूड इंडस्ट्री उसको आगे के लिए कह सकते हो कि फूड इंडस्ट्री एग्रीकल्चर का फॉरवर्ड लिंकेज क्रिएट करेगा, ठीक है, तो ये चीज है। फिर है आपका 11th स्टाइन, बॉकी करके कोई ऐसा डेवलपमेंट थियरी नहीं है पढ़ने के लिए आपको, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। 11th स्टाइन का वही अभी आपको तुरंत डिस्कस किया हमने, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थियरी, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर हैरट का, अब जैसे आपको पता है डेवलपमेंट थ्योरी, सबसे पहले हमने बेसिक्स देखा, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ये सब जो फाउंडिंग फ्रेमवर्क का काम करता है इस डेवलपमेंट थ्योरी के लिए। अब डेवलपमेंट थ्योरी फिर हमने पढ़ा, और अब हम ग्रोथ थ्योरी का एक या दो, इसमें पॉपुलर, हैरोल्ड और सोलो ही है, ठीक है, तो एक बार उसको हम रिवाइज कर लें इस क्वेश्चन के थ्रू। तो आपको मैं दे रहा हूँ 10 सेकेंड, आप इसको ट्राई करो। ठीक है, तो आप देख रहे हो, मतलब आपको इसके बाद बहुत ही कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द चीज उस चीज का क्लियर ही हो जाएगा, मतलब लगभग कॉन्सेप्ट में, इसलिए सब कुछ लिख देता हूँ इसमें। हैरड मॉडल में तीन इक्वेशन हैरड ने दिया, पहला तो एक्चुअल ग्रोथ रेट, जहाँ पे कि एक्चुअल सेविंग विल बी इक्वल टू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। फिर है आपका वारंटेड ग्रोथ रेट, जहाँ पे कि आपका एक्चुअल सेविंग विल बी इक्वल टू डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट। डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट होता है कि जैसे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मतलब कैसे हुआ कि जैसे गवर्नमेंट है, मतलब मान लो एनएसएसओ है, एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक जो मॉस्पी के द्वारा रहता है, तो वहां पे सारा डेटा जाता है कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करना, तो जीडीपी में जो आप देखते हो ना कि इन्वेस्टमेंट का भी एक्सपेंडिचर को ऐड करके हम जीडीपी, तो वो है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कंट्री का। बट एक होता है डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे कैसे बोलते हो, जैसे कोई कंपनी है, जैसे तुम ही अगर कोई कंपनी खोलते हो, तो तुम एक इन्वेस्टमेंट का प्लान इन्वेस्टमेंट होता है ना तुम्हारा, तो अगर तुम उसको अचीव कर गए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वारंटेड ग्रोथ रेट, मतलब एंटरप्रेन्योर जो है वो फुल्ली सेटिस्फाइड है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के रेट से, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का जो ये प्लान रेट है या डिजायर्ड रेट है, वो एक्चुअल से डिफर करता है, ठीक है, इसलिए जहां पे एक्चुअल यूज होगा वहां पे एक्चुअल ग्रोथ रेट बोलेंगे, और जहां पे प्लान्ड होगा उसको हम वारंटेड ग्रोथ रेट बोलते हैं। फिर आपका नेचुरल ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट में पॉपुलेशन ग्रोथ और टेक्निकल प्रोग्रेस का इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो कह सकते हो कि हेरड ने ये तीन तरह का ग्रोथ रेट बताया था, और जो नाइफ एज इक्विलिब्रियम होता है वहां पे हेरड ने कहा कि तीनों ग्रोथ रेट इक्वल होगा, ठीक है, ये देख रहे हो आप, जी इज इक्वल टू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एन। तो G इज इक्वल टू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एन, मतलब तीनों इक्वेशन हमारा इक्वल हो गया, और इसको हम कहेंगे नाइफ फेज इक्विलिब्रियम। नाइफ फेज मतलब वर्डिंग से ही समझ में आ रहा हो कि नाइफ फेज मीन्स वेरी थीन, मतलब थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस, इट मीन्स ऑल विल बी गोन, ठीक है। तो दो कंडीशन उन्होंने बताया कि जब एक्चुअल ग्रेटर होगा वारंटेड से, तो देयर विल बी सस्टेन्ड इन्फ्लेशन, और एक्चुअल अगर लेस देन होगा वारंटेड से, तो देयर विल बी सस्टेन्ड या सेक्युलर डिफ्लेशन, ठीक है। और ये पार्टिकुलर जो हमारा नाइफ एज इक्विलिब्रियम है, इस पे इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब ऑल द लेबर
विल बी फुल्ली एम्प्लॉयड, ऑल द फैक्टर्स विल बी फुल्ली एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये, और इसमें जो सस्टेन्ड का कॉन्सेप्ट है, इसी को कॉन्ट्राडिक्ट किया था सोलो ने कि नहीं, सस्टेन्ड क्यों होगा, मतलब तब तो इतना, क्योंकि इतना डेलिकेट इक्विलिब्रियम मेंटेन करना इज वेरी इंपॉसिबल। आपको पता है कि हमेशा इकोनॉमी में कोई ना कोई शॉक तो आता ही रहता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि दिस इज हार्ड टू मेंटेन दिस नाइफ एज इक्विलिब्रियम, और इसीलिए हेरोड का मॉडल को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था, ठीक है। तो अब है आपका कि सीक्वेंसिंग प्रोसेस, तो आप देखो नेचुरल कैसा है आपका, CBAD होगा, ठीक है। CBAD मतलब सबसे पहले एक्चुअल, फिर आपका वारंटेड, फिर नेचुरल, और फिर लास्ट में वी विल डिसाइड कि अगर नाइफ एज इक्विलिब्रियम में कुछ भी डिस्टरबेंस होता है तो वहां से डाइवर्जेंस हो रहा है या कन्वर्जेंस हो रहा है, ठीक है। कन्वर्जेंस तो होता नहीं है, मतलब सॉरी, कन्वर्जेंस तो होता नहीं, डाइवर्ज ही करता है, और डाइवर्ज करके देयर विल बी सस्टेन्ड ग्रोथ, मतलब देयर विल बी नो रिटर्निंग बैक। सस्टेन्ड का मतलब क्या हो गया, स्टेडी, मतलब अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो देयर विल बी चांसेस कि इट विल रिटर्न बैक, ठीक है। बट इस सस्टेन्ड या डाइवर्ज हो जाने पे द इकोनॉमी विल नॉट रिटर्न, मतलब अगर इन्फ्लेशन आ गया तो इन्फ्लेशन ही रहेगा, डिफ्लेशन आ गया तो डिफ्लेशन ही रहेगा, समझ रहे हो। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये आपका सोलो मॉडल है। सोलो मॉडल आप एक बार ट्राई करो, यहाँ पे स्टेडी स्टेट आउटपुट पर वर्कर निकालना है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दूंगा, मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करो। करेक्ट आंसर आपको लिखा हुआ है, बट आपको खुद से एक बार ट्राई, थोड़ा सा, मतलब आप इतना तो कर लो, मतलब आप देखो, मतलब मेहनत को इतना भी आसान नहीं बना दो कि सक्सेस ऐसा लगे कि नहीं फ्री में मिल गया, ठीक है। तो हम लोग तो अपने एंड से इतना, मतलब आप, आपको ये क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, अराउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 400 से 500 PYQ को मैं एनालाइज किया, और मुझे लगा कि इतने क्वेश्चंस तो एटलीस्ट करके जाओ, ताकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब सारे कॉन्सेप्ट नहीं हो जाए रिवाइज, बट 60% एटलीस्ट कवर होके जाए इस पार्टिकुलर मैराथन से। बाकी जो कुछ बचा है वो पिछले बार मैराथन में रिवाइज हो गया आपका, ठीक है। ठीक है, बाकी उस पूरे कोर्स को पढ़ने का सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं। बट इन केस अगर आपका कुछ भी हो जाता है, बहुत लोगों को कुछ ना कुछ, या तो सेमेस्टर एग्जाम आ जाता है, या फिर किसी रीजन से उनका सिलेबस नहीं पूरा हो पाता है, तो चलो ठीक है, एटलीस्ट इस मैराथन से आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो आप देखते हैं इसको। तो आपका देख रहे हो, आपका आउटपुट का प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, सेविंग रेट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है, और आपको स्टेडी स्टेट आउटपुट पर वर्कर। तो ये आपका स्टेडी स्टेट का इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको पता है, डिराइव करोगे तो ये आएगा। तो आपको y की जगह पे ये इसको, जो इस आपका एग्रीगेट टर्म में आउटपुट का वैल्यू दिया हुआ है, उसको पर कैपिटा टर्म में लाना है, तो आपका आएगा वैल्यू स्मॉल k टू द पावर 1/2, ठीक है। तो दिस विल बी वैल्यू फॉर y, s का वैल्यू 0.3 दिया हुआ है, n यहाँ पे 0 दिया हुआ है, और डेल्टा का वैल्यू 0.1 दिया हुआ है, ठीक है। और आउटपुट पर वर्कर पहले से ही के। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो k टू द पावर 1/2 विल बी इक्वल टू 3, तो आउटपुट पर वर्कर विल बी इक्वल टू 3, ठीक है, क्योंकि आउटपुट पर वर्कर इज सिंपली इक्वल टू स्मॉल के होल अपॉन टू द पावर 1/2, ठीक है, या कह सकते हो रूट अंडर के। तो इसका ऑप्शन 3 आएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। एक ये भी इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल भी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको ट्राई करो। ठीक है, इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल में सबसे अच्छा तरीका, मतलब इन शॉर्ट सबसे अच्छे तरीके से, ये तीन तो बेयर मिनिमम, ये आपको याद होना चाहिए, तीन चीज आपको काउंट करो। सबसे पहला इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल होता है। इंडोजिनस मीन्स टेक्नोलॉजी इंडोजिनसली डिटरमाइंड, मतलब जैसे कैसे सोलो में एक्सोजिनस टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होता था। एक्सोजिनस मीन्स कि
टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस विल बी फिक्स्ड, वो किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा। बट यहाँ पे इंडोजिनस में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस डिपेंड करेगा कि कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है ह्यूमन कैपिटल में, और कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है फिजिकल कैपिटल में। ठीक है, तो तीन तरीके से हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, और इसीलिए कहेंगे कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस यहाँ पे इंडोजिनस। ठीक है, तो यहाँ पे भले ही पूछ रहा है कि लर्निंग बाय डूइंग मतलब लर्निंग टेंडेंसी होता है ना, जैसे आप जानते हो कि कोई भी टेक्नोलॉजी है, आप मोबाइल फोन ही देखो कि समय के साथ इनोवेट होकर के इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं, कितना एफिशिएंसी बढ़ गई। तो इसी को बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, मतलब बनाते बनाते आपका इनोवेशन आ रहा है। ठीक है, तो ये भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को इम्पैक्ट करता है। तो लर्निंग बाय डूइंग एरो के द्वारा दिया हुआ था। ठीक है, और लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जब देखोगे तो वो रोमर का है, और लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल लुकास का है। ठीक है, एरो, रूमर और लुकास, इन तीनों का क्या कह सकते हो, एक तरह से इन्होंने फैक्टर दिया। हालांकि ये तीनों ही इंडोजिनस ग्रोथ थियरिस्ट बोले जाते हैं, बट इनका अलग अलग एक्सप्लेनेशन था टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के बिहाइंड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, और इसको ए के मॉडल ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुलाई 2018 में पूछा हुआ है, ट्राई करो एक बार आप। ठीक है, अभी आपको पता है कि इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में सारे जो आरबीआई के रेट्स हैं उसको अरेंज करना है। तो अभी जस्ट 55th एमपीसी मीटिंग हुआ है, उसमें फिर से रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज कर दिया गया है। इवन सीआरआर में क्या कह सकते हो चेंजेस आए हैं, बैंक रेट चेंज हुआ है, एमएसएफ जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो चेंज हुआ है। तो ये नया रेट्स है। ठीक है, इसको एकदम आप समझो कि ये आएगा ही आएगा, ऐसे समझो, मतलब इसको आप नहीं मिस कर सकते हो, इसको याद करके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिपीट होता है। और यूजीसी नेट का ये चीज है, अगर रिसेंट में कुछ ऐसा होता है ना तो वो डेफिनेटली पूछता है। तो इस चीज को आप मिस नहीं करो, और इसको तो बिल्कुल ही याद करके जाओ। ठीक है, रेपो रेट आपको पता है आरबीआई जो लोन देती है सेंट्रल बैंक को, कमर्शियल बैंक को, तो उस पे जो इंटरेस्ट वो अर्न करती है। ठीक है, और दूसरा रिवर्स रेपो, मतलब जो कमर्शियल बैंक कुछ रिजर्व रखता है अपना जो डिपॉजिट है आरबीआई के पास, तो उस पे कुछ इंटरेस्ट अर्न करता है कमर्शियल बैंक। तो आप ऐसे याद रखना, रेपो रेट के केस में आरबीआई इंटरेस्ट अर्न करेगा, आरबीआई लोन दे रहा होगा। रिवर्स रेपो रेट के केस में कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट अर्न कर रहा होगा। ठीक है, सीआरआर है करेंसी रिजर्व या कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये वही मतलब जो पूरा डिपॉजिट है उसका एक सर्टेन परसेंटेज कमर्शियल बैंक को रखना होता है आरबीआई के पास। एसएलआर एसेट के फॉर्म में जो भी चीज है, गोल्ड हो गया या फिर ऐसा कुछ कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, ये सब चीज एसेट का फॉर्म है, और इसका 18% रिजर्व में रखना होता है। ठीक है, एमएसएफ होता है मार्जिनल स्टैंडिंग, इन केस बैंक रन होता है या फिर कुछ ऐसा कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा क्राइसिस वाला सिचुएशन आता है कमर्शियल बैंक में, तो उस समय में आरबीआई लोन देती है। और ये एसएलआर के बियॉन्ड होना चाहिए, मतलब एसएलआर का जो परसेंटेज है 18% से ज्यादा एमएसएफ नहीं हो सकता। और बैंक रेट वही है, जैसे रेपो रेट जब फ्लैश होता है तो बैंक का जो लेंडिंग रेट है, ठीक है, वो भी कम होता है। पहले ये शिक्षा, तो कह सकते हो कि रेपो जब अनाउंस होता है कि रेपो रेट कम गया, तो थोड़ा सा, जैसे आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन बोलते हैं इसको, कि आरबीआई का डिसीजन विल ट्रांसमिट टू कमर्शियल बैंक, बट इसमें टाइम लगता है, इसमें लैग होता है। ठीक है, आप इंस्टेंट नहीं कह सकते हो इसको। इसीलिए जो है रेपो और बैंक रेट के फ्लक्चुएशन में, हालांकि वो मोर और लेस सिमिलर होते हैं, अगर ये रेपो रेट घटेगा तो बैंक रेट भी घटेगा, डायरेक्शन सेम होता है, बट जो मैग्नीट्यूड होता है चेंज का वो थोड़ा सा लेट से होता है और थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो ये था मनी एंड बैंकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर रहा हूँ। ये है जून 2011 में, इंक्लूसिव ग्रोथ किस प्लान का ऑब्जेक्टिव था, तो आप एक बार ट्राई करें।
तो इंक्लूसिव ग्रोथ जैसे 5 ईयर प्लान का ये चारों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉपुलर प्लान था। 9 5 ईयर प्लान, ये पीरियड आप याद रखना, इसका ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी इस पार्टिकुलर प्लान का ऑब्जेक्टिव था। 10th प्लान गुड गवर्नेंस, फिर आपका 11th प्लान फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। और फिर है आपका 12th प्लान, इसका मोटो था ये फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो आप कहोगे कि सर 12th 5 ईयर प्लान में भी इंक्लूसिव का बात हुआ है, बट आप क्वेश्चन पढ़ो, इंक्लूसिव ग्रोथ ऑब्जेक्टिव इज गिवन, दिया कब गया था? 12th 5 ईयर प्लान में इसी को मोर इंक्लूसिव करके मतलब कह सकते हो कि इस पे बिल्ड अपॉन हुआ था, बट 11th 5 ईयर प्लान में इसका इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। इसलिए 11th 5 ईयर प्लान इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे मैंने टिक आउट नहीं किया है, बट ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, समझ रहे हो? तो और आपको पता है कि 12th 5 ईयर प्लान पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था, 2015 में डिसकंटिन्यूड करके नीति आयोग बन गया, ठीक है, तो ये भी याद रखना। फिर है आपका कुछ कमिटीज जो कि आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये सारा टैक्स का कमिटी है, तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करो। दिसंबर 2013 में, और बहुत रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, मतलब मैंने इसलिए इसका एक लिस्ट भी नीचे रख दिया है, वो भी अभी आप देख लेंगे। तो आपको पता है कि टैक्स एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करने के लिए जो कमिटी बना था, जो रेकमेंड कर रहे थे, वो थे आपके के एन राज कमेटी बोलते हैं, ठीक है। फिर है आपका डायरेक्ट टैक्स का इंक्वायरी के लिए वांचो कमेटी, टैक्स रिफॉर्म कमेटी के लिए आपका राजा चल्ली, और आपका इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी जो है वो एल के झा। और इनका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछता है कभी कभी, कई बार पूछा है, तो ये मैंने एक लिस्ट दे दिया है आपको, आई थिंक नीचे भी दो है, हाँ। तो आप इसको याद रखना, इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी झा कमेटी, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म, फिर आपका डायरेक्ट टैक्स रिकमेंडेड जीएसटी रेट, टैक्स रेट अरविंद सुब्रमण्यम 2015 में। फिर आपका डायरेक्ट टैक्स कोड कमिटी, आप इसको कंफ्यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमिटी और डायरेक्ट टैक्स कोड कमिटी में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम के लिए राज कमिटी, ठीक है, समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम, ये जो 5 लिस्ट है गवर्नमेंट स्कीम का, ये मैं अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन करके लाया हूँ, क्योंकि इसका ना सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो पूछते हैं, बट एक तरह से इसका जिस्ट आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट कब लॉन्च हुआ, क्यों लॉन्च हुआ, मेन प्रोविजन क्या है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा ट्राई करो आप। ठीक है, फर्स्ट है आपका प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, हालांकि ये स्टार्ट हो गया था 2008 में यूपीए गवर्नमेंट के समय में, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ये जो जेनरिक मेडिसिन, आप देखते हो कि आपके भी अगल बगल में बहुत ही जगहों पे ये जन औषधि केंद्र करके खुला हुआ है, जहाँ पे कि आपका मेडिसिन का प्राइस बहुत कम होता है। उसका रीजन ये होता है कि ये जेनरिक मेडिसिन होता है, ठीक है, ये नॉर्मल जैसे आप सिप्ला वगैरह जो प्राइवेट कंपनी मेडा फार्मा मतलब फार्मा कंपनीज है, उनकी दवाइयाँ नहीं होती, ये जेनरिक दवाइयाँ होती हैं और इनका दाम बहुत ही कम होता है। तो ये अफोर्डेबल प्राइस पे सबको मेडिसिन मिल पाए, इसके लिए गवर्नमेंट इनिशियली तो 2008 में स्टार्ट हुआ था, बट 2015 में इसको पीएम मोदी ने फिर से रीस्टार्ट किया जन औषधि केंद्र के नाम से, बट प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2008 में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये 2008 में आया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मई 2016, 50 मिलियन हाउस होल्ड को एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराना। क्यों? क्योंकि आपको पता है रूरल हाउस होल्ड में विमेन वेयर वेरी मच फेसिंग द हेल्थ क्राइसिस ड्यू टू दिस, अस्थमा वाला प्रॉब्लम होता था, क्योंकि खाना चूल्हे पे बनना होता था उनका। तो 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन विमेन्स को, जो कि बीपीएल से बिलोंग करती थी, उनके लिए था इसमें। फिर है आपका अटल पेंशन योजना, अगेन ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की तरह ही रिप्लेस किया गया था स्वावलंबन योजना। यूपीए के टाइम में स्वावलंबन योजना वो भी अटल पेंशन योजना की तरह ही लाए थे, जो कि
वैसे लोग, जैसे आपको पता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में है या फिर प्राइवेट सेक्टर में जो फॉर्मली इम्प्लॉयड हैं, जो फॉर्मली इम्प्लॉयड हैं, उनको दिक्कत नहीं होता है। वो या तो पीपीएफ या एनपीएफ, उनका पेंशन का कह सकते हो कि उनका रिटायरमेंट सॉर्टेड होता है, सिक्योर्ड होता है, ठीक है। बट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिनका फॉर्मेलिटी नहीं है, वर्क वर्क में ऑर्गेनाइज नहीं है, उनको 60 ईयर्स के बाद बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन में अपने आप को वो देखते थे। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को मतलब कह सकते हो इस चीज को सही करने के लिए पहले तो यूपीए के समय ही स्वावलंबन योजना लाया गया था। इसको लॉन्च किया गया, रीलॉन्च किया अटल पेंशन योजना के नाम से मई 2015 में, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो सब्सक्राइबिंग वर्कर है 18 से 40 एज ग्रुप का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 20 सालों तक आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, तभी आप पेंशन का हकदार होंगे। और पेंशन कितना मिलेगा इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा कि अगर मान लो आप चाहते हो कि 60 ईयर्स के बाद आपको हर मंथ 55,000 मिले, तो आपका अभी प्रीमियम जो है वो ज्यादा भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 4 तरीके से आप 1,000 पर मंथ वाला भी चूज कर सकते हो, 2,000 पर मंथ आप चूज कर सकते हो, 3,000, 4,000, 5,000, 5 तरह का 5 तरह के मतलब कह सकते हो कि पेंशन का तरीका आपको मिलता है। तो आप जिसको भी चूज करोगे, अगर ज्यादा वाला चूज करोगे तो अभी प्रीमियम थोड़ा ज्यादा भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एटलीस्ट 20 साल भरोगे तब आपको ये एलिजिबल हो जाओगे इस चीज के, ठीक है। फिर है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, और ये आपको देखो मैंने बोला ना अटल पेंशन योजना पार्टिकुलरली फॉर पीपल इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। अगर आप टैक्स वगैरह पे कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड हो, तो आपको नहीं लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना 15 अगस्त 2014, ये कहता है कि एटलीस्ट वन बेसिक बैंकिंग अकाउंट सबको होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि बैंक का या फिर कह सकते हो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होना बहुत जरूरी है, और कितना ज्यादा हेल्प करता है आप खुद ही देखो। गरीब घर में या फिर रूरल एरियाज में बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम जो हैं, वो जो मतलब बेनिफिशियरी हैं उनके पास नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा करप्शन होता था। तो अगर बैंक अकाउंट है उनके पास, तो डीबीटी का यूज होता है। डीबीटी मीन डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो भी स्कीम ला रही है, इधर एमजी नरेगा हो गया या फिर कोई भी पीएम किसान के तरह जो तहत जो बहुत सारे फार्मर्स को 6,000 एनुअली मिलता है, वो भी चीज डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा। मतलब कोई भी मिडिल मैन, उनको कोई भी आकर के ब्लॉक वगैरह में पेपर वर्क वगैरह नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट है आपका आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत आपको पता है कि सितंबर 2018 में लॉन्च हुआ था। ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसके द्वारा ही रेकमेंड किया गया था, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट है। पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ओपन करना। इसके तहत 1,50,000 HWC मतलब जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है उसको इक्विप किया गया, क्रिएट किया गया, और उसमें बहुत ही ज्यादा बेहतर फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया। फिर आपका सेकंड जो इसका कंपोनेंट है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। इसमें ₹5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली, जो कि जो एससीसी डेटा मतलब जो कास्ट सेंसस हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में, उसके तहत जो भी पुअर कैटेगरी में आते हैं, उसमें जो हाउस होल्ड इंक्लूडेड है वो एलिजिबल हैं ये पीएम जन आरोग्य योजना के तहत, और उनको वही जनधन कार्ड मिलेगा। आपको भी आप अपने नेबरहुड में कई लोग सुनते होंगे कि इन्होंने इनके पास आयुष्मान कार्ड था, आयुष्मान कार्ड के थ्रू इन्होंने अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कराया या फिर इस तरह का चीज। तो ये उनके लिए हेल्पफुल है। तो आप इस तरह से आप देखोगे कि ऑप्शन डी करेक्ट है, अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाओगे, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई नहीं, आप ये 15th फाइनेंस कमीशन को देखो एक सेकेंड। मार्क कटा। एक बार आप ट्राई करो। ठीक है। तो देखो 15th फाइनेंस कमीशन, और बहुत जल्द ये क्वेश्चन अब कह सकते हो वेनिश हो जाएगा। मतलब अब मैक्स टू मैक्स 2 या 3 साइकिल में पूछेंगे ये लोग। इसके बाद क्यों? क्योंकि आपको पता है 16 फाइनेंस कमीशन का गठन हो गया, डॉक्टर अरविंद पनागारिया उसका चेयरमैन है। तो खैर अभी वो 2026 से 31 के लिए तो अभी टाइम है इसके में।
तो तब तक के लिए आप 15 फाइनेंस कमीशन का 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन कौन है, वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या है, और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्या है। ठीक है। एनके सिंह चेयरमैन है। वर्टिकल डिवोल्यूशन मतलब सेंटर आपका टैक्स कलेक्ट करेगी, स्टेट का भी टैक्स कलेक्ट करेगी और बाद में स्टेट का शेयर दे देगी। तो सेंटर का जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा उसका 41% शेयर स्टेट से पास जाएगा, सारे स्टेट से। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन मीन्स अब आपस में स्टेट्स जो है कैसे डिवाइड करते हैं इस 41% जो उनको मिला है, उसका भी क्राइटेरिया है। पॉपुलेशन और एरिया के बेसिस पे 15% एलोकेशन होगा। जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मतलब स्टेट का जो इनकम है, उसके बेसिस पे 45%। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे 12.5%। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के बेसिस पे 10%। और टैक्स एफर्ट कैसा है उस पर्टिकुलर स्टेट में, उसके बेसिस पे 2.5%। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है। तो इसका आंसर 41 होगा। और ये 14, एक इसमें एक चीज और याद रखना, 14 फाइनेंस कमीशन में ये 42% था। ये जो वर्टिकल डिवोल्यूशन था 41 इसलिए हुआ, आपको पता है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो नए यूनियन टेरिटरी बने और जम्मू कश्मीर अपना स्टेटहुड खो बैठा है। तो स्टेट एक कम गया आपके पास, तो इसलिए जो ये डिवोल्यूशन है वो 42 से 41% कर दिया गया। ठीक है। यस, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, और इससे भी मैं आपको ये चीज एश्योर कराता हूँ कि आप कह सकते हो कि इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन यूजीसी ने ना तो बनाया है, और बहुत कम चांसेस हैं कि वो इससे ज्यादा वेरिएशन लाएगा किसी क्वेश्चन में। इसलिए आप देख रहे हो कि मैं हर चीज को, अब 15 फाइनेंस कमीशन से आप देखना पीवाईक्यू आप पूरा देख सकते हो। आप 10 साल 15 साल का आप एनालाइज करके देखना, इससे ज्यादा यही चीज पूछे हैं। या तो चेयरमैन कौन है, या वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या है, या फिर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्या है। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में ये जो 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे उनका क्रोनोलॉजिकल बताओ, या फिर किसी एक का ही बताओ कि पॉपुलेशन के बेसिस पे कितना डिवोल्यूशन, मतलब यही वेरिएशन आता है। तो क्यों ना हम एक ही क्वेश्चन से सारे उस पॉसिबिलिटी को कह सकते हो कि कंप्लीटली देख लें। ठीक है, रादर की बार बार क्वेश्चन सॉल्व करें। इसलिए ये मैराथन का बहुत ही कह सकते हो महत्व है। थोड़ा सा आप इसको ट्राई करो, इसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ जून 2021 का। ठीक है। तो आपको, आप देखो मतलब जो पॉवर्टी का एस्टिमेट करने का कमिटी बना था, या फिर कह सकते हो कि अटेम्प्ट किया जिन लोगों ने, वो बिफोर इंडिपेंडेंस थे। दादा भाई नौरोजी थे, फिर आपका एक एम एन रॉय करके थे, पीपल्स प्लान बनाया उन्होंने, मतलब बहुत सारे लोगों ने, बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिपेंडेंस के बाद भी सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अलग कमिटी, लखवाला कमिटी, तेंदुलकर कमिटी, रंगराजन कमिटी, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। और चारों में क्या इंपॉर्टेंट है, ईयर ऑफ कमिटी, मतलब कब ये कमिटी बना। दूसरा, क्या बेसिस लिया इन्होंने पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए, या फिर पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए। पॉवर्टी में क्या एस्टिमेट होता है कि पॉवर्टी लाइन क्या है। दूसरा, कितने परसेंटेज पुअर हैं, कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। तीसरा, हर स्टेट के विदिन में कितने परसेंटेज पुअर हैं। ठीक है, मोर और लेस इतना ही रहता है। और एक वेरिएशन और दिखाते हैं कि रूरल और अर्बन के लिए अलग अलग पॉवर्टी लाइन बनाते हैं, मतलब पॉवर्टी लाइन इन द सेंस की पॉवर्टी का लेवल क्या होना चाहिए, वो रूरल का अलग होगा और अर्बन का अलग है। आप ही सोचो ना, मतलब रूरल एरिया में जो एक छोटा सा ये है कि अगर 1000 अगर अर्न कर रहा है, और अर्बन एरिया में वो 1000 अर्न कर रहा है, तो रूरल एरिया में ही विल बी वेरी मच ऑन द पॉजिटिव साइड। उनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत वेजिटेबल सस्ते हैं, वहाँ पे रूम रेंट सस्ता है। तो इसलिए पॉवर्टी का जो डेफिनेशन है वो अलग अलग रूरल और अर्बन के बीच में होता है। अलग कमेटी 1979 में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उन्होंने पॉवर्टी लाइन बनाया, और इन्होंने सेपरेट पॉवर्टी लाइन की बात की थी रूरल और अर्बन के लिए। लकड़वाला कमेटी, इन्होंने भी सेपरेट पॉवर्टी लाइन। और सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई एडब्ल्यू, सीपीआई आईडब्ल्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर,
ये अर्बन एरिया का ये नाम दिया इन्होंने, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, ये रूरल एरियाज के लिए नाम दिया इन्होंने। और इनका कैलोरी के कंजम्पशन के बेस पे पॉवर्टी लाइन था, जैसे इनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे था, इनका कैलोरी कंजम्पशन पे था। फिर आता है आपका दो इंपॉर्टेंट, तेंदुलकर और रंगराजन, और इसी बेसिस पे अभी मोस्ट ऑफ द स्टेट, मतलब ज्यादातर तो अभी तेंदुलकर के ही एस्टिमेशन के प्रोसेस को या कह सकते हो कि मेथड को यूज करते हैं, रंगराजन के भी मेथड को कुछ लोग यूज करते हैं। इनका था कैलोरी बेस्ड क्राइटेरियन, तेंदुलकर कमिटी। इन्होंने मिक्स्ड रेफरेंस बेस्ड, मिक्स्ड रेफरेंस बेस्ड होता है कि जैसे मान लो आपसे बोला जाएगा, जब आपसे सर्वे वाले आएंगे तो वो ऐसे बोलेंगे कि ठीक है, आप पिछले 7 दिन में क्या कंज्यूम किए हो उसका बताओ। और जैसे कुछ सामान जो है आपका डेली बेसिस पे होगा, जैसे आपको पता है फूड का कंजम्पशन, आप डेली उसका खर्च हो रहा है, तो वो बोलेंगे कि फूड का आप डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग करो। और जो आपका ड्यूरेबल है, कंज्यूमर ड्यूरेबल, जैसे आप या तो मोटरसाइकिल खरीदते हो, आप कुछ ऐसा घर खरीदते हो, ठीक है, तो वो उस चीज को दूसरे क्राइटेरिया, मतलब ये यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड नहीं रख रहे थे, ठीक है। तो मतलब बोले कि चलो फूड का आप लास्ट 30 डेज का बताओ, और हाउसिंग या कुछ ऐसा कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीद रहे हो तो उसका लास्ट 1 ईयर का बताओ, ऐसे करके। तो आप देखना कि रंगराजन ने मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस, इन्होंने तो दो दो ही चीज, मतलब दो रेफरेंस पीरियड रखा, बट इन्होंने दो से ज्यादा तीन रखा, कुछ सामान का 7 दिन का रिपोर्टिंग लिया, कुछ सामान के कंजम्पशन का 30 डेज का, कुछ का 365 डेज। फिर यहाँ पे पॉवर्टी लाइन के लिए सेपरेट बास्केट नहीं था, सेपरेट बास्केट मतलब जैसे इन्होंने रूरल और अर्बन को एक ही माना, समझ रहे हो, रूरल अर्बन को एक ही मानने का मतलब उनके कंजम्पशन का बिहेवियर को सेम माना, उनको लगता था कि दोनों का कैलोरी का रिक्वायरमेंट सेम है, ठीक है। तो वो तेंदुलकर का कहना था, और इन्होंने सेपरेट पॉवर्टी लाइन यहाँ पे कि नहीं नहीं, रूरल और अर्बन का कंजम्पशन पैटर्न अलग होता है। फिर इनका इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी लाइन, डेली बेसिस पे क्या कैलकुलेट किया था इन्होंने, और मंथली, और सेम रंगराजन के केस में क्या था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। तो तेंदुलकर का डेली बेसिस पे रूरल में 27 रुपया था, और आपका अर्बन में 33 रुपीज, और वही मंथली पे हो जाता था 446.68, और अर्बन का 578.80 हो जाता था, ठीक है। सिमिलरली रंगराजन के केस में $332, $47 रूरल अर्बन का, और मंथली में वही 972 और 1407। और एक चीज और आप देख लो, I think यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वर्ल्ड बैंक भी, सॉरी, वर्ल्ड बैंक भी, वर्ल्ड बैंक भी अपना एक पॉवर्टी लाइन के लिए, और आपको पता है रिसेंटली अभी मैक्स टू मैक्स 10 भी दिन नहीं हुआ हूँ, वर्ल्ड बैंक का पॉवर्टी लाइन का अभी उन्होंने $3 कर दिया है, कि $3 पर डे से अगर कोई कम अर्न कर रहा है तो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ पुअर कैटेगरी। पहले ये 2.15 था, ठीक है, $2.15 था, अभी इंक्रीज हो गया, तो अभी ये पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना आप इस वाले केस में, एक ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आई होप इट हेल्प यू, और आपको ठीक है, और आप मतलब एटलीस्ट इसको, और आप 1.25 या 1.5 इवन 2x पे देखो, मतलब मेरा सलाह ये रहेगा, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपको मैं लास्ट वाले भी जो टॉपिक वाइज वाले में ही यही चीज बोला था कि ये पैसिव लर्निंग हो रहा है, पैसिव पैसिव लर्निंग में आपके पास समय कम होता है, इसलिए आप पैसिव लर्निंग करते हो। पैसिव लर्निंग मीन्स कि कितनी बार ये जो कंटेंट है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के सामने से रिवाइंड हो, ठीक है। तो एक बार नहीं, मैं कहूँगा 2 बार देखो, और दो दो बार दोनों देख लो। पिछला वाला आई थिंक 6 आवर्स के अराउंड है, ये भी उसी के अराउंड होगा, तो अगर आप 2x पे देखते हो तो 3-3 घंटे का, तो 3-3 घंटे का है, तो एक दिन में 6 घंटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम अब देख लो, अब 2-3 दिन में एग्जाम है, मतलब एक एक वीक भी नहीं बचा हुआ है। तो दूसरा चीज ये है कि कम से कम 2 बार, मतलब मेरा बात मान लो, बस थोड़ा सा एज ए गाइड बोल सकता हूँ कि 2 बार आप कर लो दोनों को, तो आपको याद रहेगा चीजें, ठीक है। इवन आप एग्जाम के दिन भी अगर सेकंड शिफ्ट में, आपको पता है 29 जून को सेकंड शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट में आप ये वाला ये वाला नहीं, टॉपिक वाला आप उस दिन देख लेना, ठीक है। ये वाला आप एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले 2 बार देख लो, ताकि सब कुछ कॉम्प्लीमेंट हो जाए, कुछ भी रहे ना, ठीक है। और आपको, आप खुद ही, मतलब आप अगर एग्जाम दिए होगे तो आपको भी पता है कि आप जितना
हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि एग्जाम के जस्ट पहले वो सब नहीं करो, नहीं तो बहुत ही ज्यादा, मतलब ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर एग्जाम के जस्ट पहले भी इस तरह से पैसिव लर्निंग कर लिए ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका, क्योंकि ये सब्जेक्टिव नहीं है कि आप पढ़ के क्या हो, ये ऑब्जेक्टिव है। इवन एक क्वेश्चन भी अगर जस्ट पहले देख के गए हो तो इतना तो माइंड का है पावर, मतलब कैपेसिटी होता है सबका, कि जो अभी जस्ट 1 घंटे पहले देख के आए वो तो आप सही मारोगे। ठीक है, सही टिक करके आप। तो ऑल द बेस्ट, और आप अच्छे से करो तैयारी। ठीक है, तो बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड, और आप जेआरएफ क्लियर करो। थैंक यू।